ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತ ತರುಣ ಶಕ್ತಿಗೆ ನಾನು ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಹುಡುಗಿ ಹೋದ್ರೆ 10 ಮುಸ್ಲಿಂ ಹುಡುಗಿನ ಹಾರಿಸ್ಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ, ನಿಮಗೆ ಉದ್ಯೋಗ, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ದು ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆ ಸಂಘಟನೆ. Once again, Pramod Muthalik at it. Very controversial statements that have come in. This comes at a time when the state is also headed to polls. And Pramod Muthalik is a habitual offender when it comes to making statements of this nature. Also a poster boy of Hindutva there. Pramod Muthalik making these controversial statements. It's time for a quick break here. We're getting you much more news on the other side. Over 3 decades, Business Today has delivered news, views and analysis like no other. Now, Business Today presents the future. Could I request Mr. Arun Puri, our Editor-in-Chief, to come up on the stage with the Finance Minister as we unveil the anniversary issue of Business Today. This is the 31st anniversary of India's #1 news magazine. BT produces a cover with an AI avatar of Petition on its 31st anniversary issue. Visit businesstoday.in/subscribe and subscribe now. Filmmaker Todd Phillips has unveiled the first look of Lady Gaga in a scene with Joaquin Phoenix, the Joker from the upcoming film Joker, Folie à Deux. The film will reportedly also feature Catherine Keener, Brendan Gleeson and Zazie Beetz. It's so awful, isn't it? The Joker sequel is scheduled to release in theatres on 4th October 2024. For my whole life, I didn't know if I even really existed. But I do. Sports drama Ted Lasso is all set to return with the 3rd season. Oh, yeah. The makers have now released a teaser. Latest season will focus on the newly promoted AFC Richmond, which is trolled as the media predictions widely peg them as last in the Premier League, and Nate, now hailed as the Wonder Kid, has gone to work for Rupert at West Ham United. Well, if seeing is believing, I believe we've been seen. The series stars Jemmy Swift, Phil Dunster, Toheb Jimo, Christo Fernandez, Kola Bokini, Billy Harris and James Lance. Ted Lasso Season 3 will premiere on 15th March. Oh, yeah. Entertainment Bureau, India Today. All right, a quick check of stories across the country in brief now. Unidentified miscreants allegedly pelted stones at AIMIM chief Asauddin Owaisi's residence in the national capital. Following this, the chief approached the police and lodged a complaint. Also, Asauddin Owaisi has said this is the 4th such attack at his residence.
A vehicle, mixer truck and a JCB, which are being used for construction of a road, were allegedly set ablaze by Naxals in Kanke district of Chhattisgarh. Police team reached the spot. Investigation is underway. A miscreant allegedly threw acid on a minor girl for rejecting his marriage proposal in Karnataka's Ramanagara. The accused has been arrested. The girl has suffered burns on her face and eyes. Two dead in violence in Patna after a violent clash broke out between two groups over a parking dispute. During the violence, a mob set afire a few buildings. 5 people were injured as well. With that, it's time for a quick break here. We're getting you much more news in just a bit. $400,000 folds on this device is what the company claims, and this is the biggest cover display ever on a flip device especially, and you can do all sorts of things. Of course, you can see the Oppo and Hasselblad branding very clearly. Of course, OnePlus has that partnership as well, and that really means that maybe when you're talking about the color science with this camera, we will be able to see some sort of development, some sort of improvements, but that you'll only see in our full-fledged review. The device obviously has a better battery, they claim, than even the Samsung Flip 4. That's something we want to test out on the show. And more importantly, number of folds aside, the best thing about this phone is that, one, when it is folded, this form factor can easily be pocketed. You can carry it around, but when you open it up, for the life of me, maybe I need to wear glasses, cannot see the crease, right? That's what they claim. It's an invisible crease. Let's just put it this way. Of course, you can see some level of a crease when light hits it, but compared to the Samsung Flip 4, this genuinely is a work of art. Now, one thing when you're comparing these two devices, and that's but natural for you to compare two flagship foldable devices from rival brands, one thing I want to understand is that they've not mentioned anything about water and dust resistance, whereas the other brands do. So I caught up with someone at Oppo to get some answers. Have a listen. $400,000 folds on this particular device, very durable. The cover screen looks impressive as well, but the question that the Tech Today community would have for you, and I'm going to place that question forward to you, is why no IP water and dust resistance on the Oppo Find N2 Flip? First of all, what I really like to always mention is IP is a certification, right? It's a proof, it's a label that you can apply for, and then you can write IP. Not having IP certification does not mean that we don't take daily life and daily use serious. When you see the device, when you would unmantle the device, you see there's a lot of sealings, for example, for the hinge to make sure that there is no dust getting behind the display. Even when you close the phone, because of the U shape, it closes completely flat. So there no dust can enter like on other devices in the market and get in between, creating friction and like scratches and those kind of things. Last but not least, for water ingress or water damage, we make sure and we do a lot of work to make sure that it's like life-proof, I would call it. If there's an accidental splash of your coffee in the morning or your tea, if you prefer that, there should be no issue with this. You should not take it to the swimming pool, to the ocean, but you should also not do that with any IP rated That's phones. true. That's very true. Yeah.
We have some news just coming in. Well, after Titler finds a place in top Congress body, BJP's Mohabbat ki dukaan jaye with the Congress. After more responsibility for tainted Congress neta, BJP says Congress ka haath Sikh killers ke saath. BJP tweet on Congress promoting Jagdish Titler once again. Congress again gave a big responsibility to Titler, promoted and patronized by Congress once again. Is this Mohabbat ki dukaan or Congress? From Sajjan Kumar to Titler to Kamal Nath to justifying Sikh genocide by saying a big tree falls are chicks. Congress ka haath Sikhon ke murderers ke saath is what the BJP is now said. Rahul has more. Rahul, not the first time that Jagdish Titler has been rewarded or given an important responsibility by the Congress. What is their compulsion this time around? Well, as far as Congress Party is concerned, they have made it very clear that since all these are mere allegations and nothing has been proved in the competent court, therefore, they're going to continue with Jagdish Titler. If you remember, similar kind of controversy also erupted when Jagdish Titler was supposed to walk in Bharat Jodo Yatra. At that point of time, also opposition made, the opponents of the Congress Party also made a lot of grievances at that point of time. And later on, this idea was dropped. And now his name has been inducted, as AICC delegates who are supposedly going to participate in the plenary session that is going to be held on 24th of February. Now, the BJP is saying that this only shows the anti-Sikh mindset of the Congress Party, and by providing him, designations and offices, to Jagdish Titler only show that how they only continue, with him with impunity. So you can expect that that the opponents of the Congress Party are certainly going to raise this issue and will try to create a narrative that how Congress Party is standing with one person who has been accused in anti-Sikh rights. Rahul getting us all of those details. The BJP again has criticized the Congress Party for giving responsibility to Jagdish Titler. BJP says Congress ka haath Sikh killers ke saath. Listening to what BJP Shahzad Poonawala had to say. Time and again, rubbing salt into the wounds of the Sikh brethren who suffered in 1984, the Congress Party has once again given a promotion to Jagdish Titler. Earlier too, Jagdish Titler was promoted. He was made the member of the Working Committee of Delhi Congress, then taken in the MCD election committee. He was also made part of the Bharat Jodo Yatra committee, and now he has been made an AICC delegate ahead of the Congress plenary session by the Delhi Congress committee. This shows that the first family completely supports and endorses Jagdish Titler. This is the same family which justified the Sikh riots and said that when a big tree falls, the earth shakes. This family also tried and defended for 34 long years Sajjan Kumar, who was convicted only after the Modi government came to power. Time and again, the Congress Party has been rubbing salt into the wounds of the Sikh victims and of the 1984 victims and have been giving patronage to such kinds of elements. On the one hand, Rahul Gandhi says Mohabbat ki dukaan, but this is actually the business of nafrat that the Congress Party is doing by promoting and giving patronage and political support and promotion to those who have been accused of the 1984 genocide and narsanghar of the Sikhs. Now the news clashes rocked Delhi's JNU once again. This time the showdown was over Shivaji Maharaj. ABVP activists accused the left-wing workers of vandalizing and insulting Shivaji, shared pictures of the portrait condemning this incident. Not only this, ABVP workers staged massive protests seeking action against left members. JNU Students' Union, on the other hand, alleged that ABVP activists attacked some students, creating ruckus inside the campus. JNU wasn't the only flashpoint. BJP workers clashed with Telangana cops in Rangana Reddy district during Shivaji Jayanti celebrations. Scuffle broke out as BJP hadn't taken permission for this event. एबीपी के जेएनयू के स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। कल क्या हुआ था सर? देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जेएनयू के द्वारा वीर शिवाजी जी की जयंती, शिव जयंती के शुभ अवसर पर जेएनयू एसयू कार्यालय में, छात्र संघ कार्यालय में उनके चित्र का अधिष्ठापन किया गया था दीवार पे, और माल्यार्पण और पुष्प अर्पण किया गया था। लेकिन यह चीजें
ये राष्ट्रवादी चीजें और राष्ट्र से जुड़े हुए जिनकी लोगों की आत्मा में वीर शिवाजी हैं, उनसे जुड़ी हुई चीजें इन वामपंथी गुंडों को बर्दाश्त नहीं हुई। वे लोग आते हैं और उनके चित्र को उठा करके फेंक देते हैं, बोलते हैं शिवाजी विवाजी नहीं चलेगा, यहाँ पर सिर्फ माओ लेनिन चलेगा, ये जेएनयू है। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ कार्यकर्ता वहाँ मौजूद थे, उन्होंने विरोध किया, क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों मेरे शिवाजी के साथ ऐसा कर रहे हो, या मेरे ही नहीं पूरे देश के हैं शिवाजी, तो इनके चित्र को उठा करके मत फेंको। और उस पूरी घटना की मुख्य सूत्रधार एक लड़की है जो कि यहाँ के स्टूडेंट्स भी नहीं है। हम लोगों ने उसका वीडियो भी बनाया है, वह भी मैं आपको दूंगा, और पुलिस से भी मैं मांग करता हूँ कि उस पर अविलंब कार्रवाई हो। क्या आप लोगों ने पुलिस से शिकायत की? सर, कल जब घटना हमें आइडिया लगा कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो हम लोगों ने पुलिस को फोन किया और सूचित कर दिया था कि ऐसा होने वाला है। पुलिस आई, लेकिन कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई। जो घटना में मेन कल्प्रिट एक लड़की है जिसने ब्लू जैकेट पहना हुआ है, सबको जानकर आश्चर्य होगा कि वो जेएनयू के स्टूडेंट ही नहीं है, और कल के पूरे घटना चक्र का मेन कल्प्रिट वही है। उसी ने पूरे घटना चक्र को अंजाम दिया और वो जेएनयू के स्टूडेंट ही नहीं है। एक आरोप ये भी है लेफ्ट विंग का कि बिना इजाजत के प्रोग्राम किया। सर, फोटो लगाना था, और फोटो किसी हम लोग अफजल गुरु का फोटो नहीं लगा रहे थे, हम लोग वीर छत्रपति शिवाजी का फोटो लगा रहे थे, जो जिनके लिए इतिहास में, अगर आप इतिहास के पन्नों में जाए तो शायद कोई किताब कम पड़ जाए, उनका फोटो लगाना था। और वो भी स्टूडेंट कम्युनिटी सेंटर में। वहाँ पे वो कम्युनिटी सेंटर पूरे के पूरे स्टूडेंट के लिए बना है, वहाँ पे हमें किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप देखेंगे तो जो उस लेफ्ट में पूरे के पूरे घटना चक्र को जिस लड़की ने अंजाम दिया वो स्टूडेंट ही नहीं है। हमारा भी ये एलिगेशन है कि वो लड़की स्टूडेंट नहीं है, तो उसे अंदर कैसे घुसने दिया गया। कितने छात्र घायल होंगे? हमारे 5-6 कार्यकर्ता घायल हैं, उनका इलाज सफदरजंग और एम्स में हुआ, रात्रि में वो आए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन अब क्या कर रहा है, लगातार जेएनयू में दंगे हो रहे हैं, हाँ, पहले पत्थरबाजी हुई, अब और आज लड़ाई हुई। तो मेरा प्रशासन से सवाल है, यहाँ जो कॉमन स्टूडेंट्स हैं वो समस्या का सामना कर रहे हैं, उनको कुछ आप सिक्योरिटी नहीं दे रहे हो, लगातार लड़ाई कर रहे हो, पढ़ाई में लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो आप ये पॉलिटिक्स के अंदर, पॉलिटिक्स जेएनयू में अभी से नहीं हो रही है, विचारों की लड़ाई थी, इस समय हिंसा हो रही है, तो ये हिंसा कॉमन स्टूडेंट को बर्दाश्त नहीं है। दिल्ली पुलिस के यहाँ लगभग 50 लोग खड़े थे, वो कुछ नहीं कर रहे थे, यहाँ मुँह ताक के देख रहे थे, तो वो उन पर सवाल उठता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे, तुम लड़ाई करवा रहे थे, यहाँ हाथापाई हो रही थी, मैं देख रहा था, दोनों तरफ से हो रही थी, पता नहीं कौन मार रहा था, दिल्ली पुलिस के 50 लोग यहाँ देख रहे थे। With that, it's time for a break. On the other side, India retained the Border Gavaskar Trophy as they win the second test by 6 wickets. Ravindra Jadeja named player of the match. What a moment and what a finish for Cheteshwar Pujara. Wonderful to see that these things... Today never fails to bring you the latest updates from the art world, and that's why today we are here at the India Art Fair. Art and tech sounds a bit off, does it? Well, actually, art and tech have a history, and that history dates back to the 1950s. And today we are going to walk you through the history of art and tech on Tech Today. Like I said, the history of tech and art dates back to 1950s, when there were just these precursors of computers and people trying to integrate art with that. Next we come to the roaring 60s. And in 60s, people were plotting different points and they were trying to create images out of it. And that's how art and tech were collaborated in that time. Next, we come to 1970s, where computers were all around and they were used in companies, in corporate offices, in industries. And people were still, trying to integrate art with tech. There was animation and there were other programs that were coming up. And in the next decade, when we come to 1980s, personal computing had become a big fad. And people had projects, people had applications like the Photoshop, like Microsoft's Paint, and all these platforms were used to integrate art along with tech. Next we come to 1990s, where the internet is in its nascent
stage and people are collaborating digitally to create art forms. Next, we come to the 2000s, where almost everybody has internet. You're talking about new media, there's entertainment, digital entertainment, computational art. And next, we come to the interesting phase in the history of art and tech. We talk about artificial intelligence and how machine learning and AI is able to create art. And lastly, we come to the present times. We talk about art on blockchain, tokenization of your art so that you have individuality to it. Well, it was the Ashwin Jadeja show in Delhi as India beat Australia by 6 wickets in the second test to retain the Border Gavaskar Trophy. Ravindra Jadeja picked 7 in second innings and total 10 wickets in the match and was named player of the match. Here's how the action panned out. Australia came out to bat on day 3, hoping to extend their 62-run lead. But Ravichandran Ashwin foiled Australia's plans and removed Travis Head in the first over of the day. Matthew Hayden said cat and mouse. And the cat... He struck again, and this time it was the dangerous Steve Smith who was sent back to the pavilion. Okay, pitch outside off, impact in the air. It's 85 for 3. And then began the Ravindra Jadeja show. With his accurate bowling, the southpaw ran through the Aussie middle order and the visitors were reduced to 95 for 7. Gone. Another example of just that. Australia folded for a paltry 113 and Jadeja finished with 7 wickets in the second innings. This morning, absolute demolition job. But for KL Rahul, things didn't change much on day 3 as he was again dismissed early. Go on, Mark Waugh. It's another wicket in the session. There he goes. Rohit Sharma entertained the crowd with some big hits. Batting from Rohit. But a mix-up between him and Pujara cost him his wicket. Rohit Sharma, the test batter, gets out. Virat Kohli looked good for his 20, but for the first time in his test career, he was out-stumped. That's a good shot. While India lost a few wickets, Pujara remained solid and ensured that India stayed in control of the game. Nicely punched on the back foot. The winning runs came from the man playing his 100th test match, and India are now 2-0 ahead in the Border Gavaskar Trophy. To see that these things can still happen. Sports Bureau, India Today. All right, the report and much more going up on our website as well. That's indiatoday.in. You can also download the India Today app. News continues on the other side. Thanks for watching.
यमला पगला दीवाना ओ रब्बा इतनी सी बात न जाना के आओ मैनू प्यार कर दी है साडे उत्ते वो मर दी है. After having an illustrious career in Indian cinema, Dharmendra is all set to make his digital debut with his upcoming historical drama Taj, Divided by Blood. The veteran actor took to social media to share his first look and wrote, "Friends, I'm playing Sheikh Salim Chishti, a Sufi saint in film Taj. A small but an important role. Need your good wishes." Apart from Dharmendra, the project will also feature Nasiruddin Shah, Aditi Rao Haidari and Ashim Gulati in key roles. That's not all. Dharmendra will be seen making his comeback with Karan Johar's directorial Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani, opposite Shabana Azmi and Jaya Bachchan. The film will also star Ranveer Singh and Alia Bhatt in the lead roles. It seems like Nawazuddin Siddiqui's troubles are never ending. While he is facing trouble in his personal life, it is now creating havoc for his future projects as well. According to reports, OTT platform Amazon Prime, which had announced the release of his film Tiku Weds Sheru, has now decided to put it on hold. As per reports, the streaming giant has taken this decision to avoid bad publicity which could bring losses to the film. Apart from Nawazuddin Siddiqui, Tiku Weds Sheru will also star Avneet Kaur. The romantic drama is produced by Kangna Ranaut and is directed by Sai Kabir. Entertainment Bureau, India Today. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. तो जैसे सबसे तेज आपकी टैगलाइन है, तो इसी तरह से सबसे तेज हमारी सरकार की लाइफलाइन है. Thank Mr. Puri. I thank you for giving me the chance to address you. Terrorism now a global issue. The First Lady position is so unusual. Never in my career did I ever see that love and affection in any other country than we saw in India in 79. Pakistan has been responsible chronically for association with sponsorship of terrorist groups. Watching India Today. Hi there, very good morning. You're watching India Today TV. I'm Sneha Murdani. Let's tell you what the top stories this Monday morning are. With the Mahayuddh to survive in Supreme Court. After Shinde wins round 1 of Who is Real Sena, Uddhav Sena loses verified badge on Twitter and YouTube. Shivaji showdown in JNU campus as ABVP and JNU students clash over Shivaji portrait. ABVP accuses left-leaning JNSU of desecration of portrait. Sri Ram Sena Chief Pramod Muthalik's shocking anti-love jihad says open invitation to youth to trap Muslim women to counter love jihad.
Ola inking pact with Tamil Nadu government for electronic vehicles and battery units sparks a political war in Karnataka. Opposition and top industry face questions as to why Karnataka lost out. Rajasthan communal cauldron boils. VHP backs the family of accused Gauraksha. Cop allegedly assaults the accused pregnant wife. Bajrang Dal backs accused Monu Manesar. After Twitter, Meta to launch paid verified badge for users. Services to start for $12 a month in New Zealand and Australia. Some news just coming in right now. Uddhav faction has filed a petition against the Election Commission order in Supreme Court. Day after Shinde won round 1 of the Sena war, Uddhav moves court against the Election Commission order on the bow and arrow symbol. All eyes now on round 2 of the Sena symbol war today. No clarity yet on when the matter is going to be heard is what we know. Anisha Mathur has more details on that story. Anisha, for the moment, get us the details of what is being said by the Uddhav Sena faction in court as to why the Election Commission order is not justified. Well, Sneha, for now, what we do know is that the Uddhav camp lawyers are filing the petition and they're in the process of trying to get it mentioned for urgent hearing. We do not have details of the petition per se right now because they are being very tight-lipped. But from our sources, we have learned that they are likely to assail the EC order on 2 points. One, that the Election Commission should not have passed this order while the Supreme Court is still in the process of hearing the disqualification issue regarding Eknath Shinde faction and the 16 MLAs who were facing disqualification. Second, what they're likely to argue is that the Election Commission did not take all the facts on record. Remember, Election Commission being a constitutional body, there is a very limited scope for challenging their orders, especially in a situation like this where the Shinde camp is also fighting, the Uddhav camp and the Shinde camp are also fighting it out in the court. But with the limited scope of judicial review available to the Uddhav camp, they are going to be asking the Supreme Court to step into the matter, to hear this matter urgently, because also we've seen the political development outside of court where we've seen the Shinde faction laying claim to not just the symbol but also the party office, etc. in Maharashtra. So today is going to be a very, very crucial day. We're still waiting for an update from Uddhav Thackeray's legal team on whether they have been able to get the petition through to the registry and whether they're going to try and get an urgent hearing today itself. Back to you. All right, Anisha, I'm going to thank you for the moment for getting us all of those details. The matter has been listed and this battle is going to play out legally in the Supreme Court of India. So what is this war about? War with the Sena symbol continues between the Uddhav camp and the Shinde camp. Uddhav faction has filed a petition in Supreme Court against the order of the Election Commission. Sources say they're pushing the matter for urgent hearing. Calling the order undemocratic, Uddhav said poll panel's decision is dangerous for democracy. Uddhav firing a fresh salvo at the BJP said it wants Bala Sahib's name but not his son, and that they can steal the symbol but can't erase Lord Ram from his hearts. But in another big setback, the Uddhav Sena camp plots its verification badge on Twitter as well. In this war, Amit Shah has trained guns at Uddhav, saying it was him who ditched the BJP and joined hands with the NCP and the Congress. उन्नीस को देवेंद्र जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़े थे या नहीं लड़े थे भाई? जरा जोर से बोलो, लड़े थे या नहीं लड़े थे? बड़ी फोटो मोदी जी की लगाई थी या नहीं लगाई थी? छोटी फोटो उद्धव जी की थी या नहीं थी? मैंने भी हर जगह पे कहा, मोदी जी ने भी हर जगह पे कहा, और चुनाव के नतीजे आए, मुंह में पानी छूटा, सारे सिद्धांतों को तरबतर कर शरद राव की शरण में जाकर बैठ गए। कल कोई आया था पूना में, कहते हैं, उन्होंने पूछा क्या कैसे चल रहा है महाराष्ट्र में, तो कहा कि आज बड़ा अच्छा दिन है। तो क्यों? तो शिवसेना का
नाम और चिन्ह हमने अपने साथ जो गुलाम आए हैं उनको दे दिया। तो व्यक्ति बोले बहुत अच्छा, मोगैम्बो खुश हुआ। ये मोगैम्बो है। मिस्टर इंडिया अगर आप याद करें तो उसमें यही है ना, मोगैम्बो यही चाहता था कि देश में एक दूसरे के साथ लड़ाई हो जाए, लोग आपस में लड़ते रहे और वो लड़ाई में व्यस्त रहेंगे तो मैं राज करूंगा। यही तो है आज के मोगैम्बो, यही तो है। उद्धव जी ने शिवसेना के विचारों को तो पहले ही त्याग दिया था। उन्होंने हिंदुत्व को त्याग दिया, सत्ता के लिए स्वैराचार किया, दुराचार किया, अपने पार्टी के वफादारों को पार्टी से निकाला, अपने परिवार को साथ में भी नहीं रखा। उनका सगा भाई उसको प्रॉपर्टी से बेदखल करने का न्यायालय में लड़ाई लड़ी। तो उन्होंने अपने आप को ठाकरे परिवार से और अपने विचारधारा से अलग तो पहले से किया था। आज सिर्फ न्यायालय से उसके ऊपर मोहर उठी है। आप खरीदो फरोख्त करेंगे एमएलएस की, पार्टीज को तोड़ेंगे, तोड़ के अपनी सरकार बनाएंगे, उनका सिंबल इलेक्शन कमीशन के जरिए छिनवाएंगे, नाम छिनवाएंगे और फिर आप कहेंगे सच्चाई की जीत हो गई। तो मुझे लगता है खिरत का नाम जुनू रख दिया, जुनू का खिरत। So the war is ongoing. The tu-tu-me-me is on between both the factions now. It's a full-fledged legal fight in Supreme Court. Sena fighting for stay on the Election Commission order that favoured Eknath Shinde. Shinde camp files here as to petition. Supreme Court can uphold or nix the Election Commission symbol order. The Supreme Court can also send a notice to both sides and also to the Election Commission to explain why the Eknath Shinde camp was given the bow and arrow symbol. More news coming in. The faction mentions the appeal against the Election Commission before the Chief Justice of India refuses urgent hearing. However, CJI has refused an urgent hearing, says there is a process of mentioning that must be followed. Essentially, what we were hearing is that Uddhav Thackeray faction is pushing for urgent listing of this case. Not happening, says the CJI. Essentially, the Chief Justice of India has in that sense given a thumbs down, refusing an urgent hearing to the Uddhav faction, saying that there is a process of mentioning and that process must be respected and followed. Anisha Mathur is getting us more details. Anisha, you had told us earlier that the Sena faction, the Uddhav Sena faction, was pushing for an urgent listing of this matter. Given that the elections, BMC elections also just round the corner, but the court has said follow the rules. It's not happening just yet. Well, yes, Neha, what that effectively means is that the Uddhav faction will have to now get this matter mentioned again, either to, at the end of the day today or tomorrow morning, when normally what happens in the Supreme Court is that if you want to get a matter mentioned and listed for urgent hearing, then you have to file that application, that you need to file that form by 10:25 a.m. And if you don't do so, then you do not get a chance to mention the matter on the same day. It is usually sent on the next day, which is what has happened to the other faction's petition today. They were not able to complete the process by 10:25, which is why the Chief Justice has asked them to follow the process that has been prescribed, which means that the other faction will now have to move matter for urgent hearing again tomorrow morning and seek an urgent hearing of the matter. But what is clear is that the other faction is trying its level best to get their side of the story heard, to get the court to intervene as soon as possible in this particular matter, because the Shinde faction on Friday was given the bow and arrow symbol and the name of the Shiv Sena by the Election Commission, which the Uddhav faction has maintained is something that the EC could not and should not have done at this stage, even as the Supreme Court is yet to hear the disqualification issue. Secondly, what we do know is that the Uddhav faction is also worried because the Shinde faction, according to reports, has sent in a letter to the assembly saying that they want to now take over the Shiv Sena office, the Shiv Sena title, etc., and they want to start the work for that. So once all of that begins, then it will be more and more difficult for the Uddhav faction to sort of get back to where they were, to sort of also save face when it comes to the BMC elections that are supposed to happen soon enough.
So it is going to be a process that the Uddhav faction will be following, making sure that they will be trying their level best to ensure that their matter is heard as soon as possible. Back to you. All right, I'm going to thank you for the moment, Anisha Mathur, getting us all of those details. The CGI there saying that the listing will happen as per procedure and not instantly. Uddhav faction wanted urgent listing of the case, and that's not happening in court. All right, and we have more news coming in. Ruckus inside the UP Assembly on the first day of the budget session. These are pictures from inside the Assembly. Let's take a look. Abhishek is with us for more details. Abhishek, what's going on inside the Assembly right now as we speak? Placards being held up. Well, certainly, Sneha, today was the first day of the UP budget session, and on day one, the picture which emerged of Samajwadi Party protesting within the premises and outside the premises of the UP Assembly. They were, making big slogans against the government about the law and order situation and the kind of incident which has happened in Kanpur Dehat. But right now, in the UP Assembly, Governor Anandiben Patel is addressing the joint session, and at the same time, the protest is also continuing within the premises of the Assembly. The Samajwadi Party MLA are in the well. They are continuously raising questions over the law and order situation, and they are interrupting the address of the Governor Anandiben Patel. At the same time, CM Yogi Adityanath, just before the session, addressed the media. He appealed to all the opposition leaders to cooperate in terms of making this budget session more constructive. But the Samajwadi Party from day one itself is now targeting the government. We have seen the pictures of Shivpal Yadav, Manoj Pandey, Naresh Uttam and the big leaders of the party, on the dharna just outside the gate. Also, for the first time, the media was also deviated from the spot, and that created a situation there. But right now, within the Assembly, where the Governor Anandiben Patel is addressing the joint session, speaking about the agendas and the kind of work the government has done in the past year. But the Samajwadi Party is constantly targeting the government on several issues, including the law and order situation and the Kanpur incident, which is the major highlight. Akhilesh Yadav has also spoken to the media. He said that the government is not interested in getting the caste census done in Uttar Pradesh. He's also speaking about the youth empowerment and the situation of unemployment, and is saying that he will address major issues in this session. So it clearly shows this time both the parties, Samajwadi Party and BJP, is all set. They are targeting each other, and right now the Governor Anandiben Patel is addressing the session here in the UP Assembly. Yes. Thanking you for the moment, getting us all of those details. Abhishek joining us with the very latest as far as the ruckus inside the Assembly is concerned. More news coming in. The ED is conducting searches at 14 locations in Chhattisgarh in connection with the coal levy scam. First response from the Chief Minister Bhupesh Baghel says BJP is frustrated with the success of the Bharat Jodo Yatra, and the truth of Adani is exposed. This raid in his attempt to divert attention. The country knows the truth. We will fight and we will win. Coal levy scam relates to money laundering through extortion racket that targeted coal buyers and transporters in Chhattisgarh. ED has so far attached assets worth 152 crore in coal levy scam. The Enforcement Directorate is conducting searches at 14 locations in Chhattisgarh in connection with the coal levy scam. Some of the premises being raided are linked to Congress and other office bearers of the party. Some legislators as well were close aides of Chief Minister Bhupesh Baghel. Simultaneous raids being carried out at Congress MLA Devendra Yadav's residence, Chhattisgarh Congress Treasurer Sunny Agarwal's residence as well. Even the Chief Minister's elder brother Dharmendra Yadav's residence is being raided. Baghel has slammed BJP, saying it was carrying raids to divert attention from the Adani issue. Says BJP was afraid of the Bharat Jodo Yatra's success. इसके 50वें अधिवेशन जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। कांग्रेस के अधिवेशन को डिस्टर्ब करने के लिए, जैसा कि आशंका थी, भारतीय जनता पार्टी ने
ईडी को आगे कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी जब भी राजनीतिक मुकाबला नहीं कर पाती है तो ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय संस्थाओं का दुरुपयोग करती है। ये भारतीय जनता पार्टी के आरोपों को पुख्ता करता है कि छत्तीसगढ़ में हर स्तर पर व्यापक भ्रष्टाचार है। छत्तीसगढ़ के गरीबों के खून पसीने की कमाई को लूटा जा रहा है। अब तक ईडी ने जो कार्रवाइयां की थी उसमें बड़े पैमाने पर संपत्तियों के कागजात और संपत्ति मिली है, और आज जो ईडी कार्रवाई कर रही है उससे ये प्रमाणित होता है कि छत्तीसगढ़ के गरीबों को किस प्रकार से लूटा जा रहा है। All right, we have in fact a press conference that's being held by Congress's media in charge, Jairam Ramesh, on the ED raids in Chhattisgarh. He's quiet on the Adani Maha Mega scam, and he has unleashed the ED on the Congress party. Where he needs to unleash the ED, he does not unleash it. And of course, those people against whom the ED has been unleashed in the past, after they have joined the BJP, they have fair and lovely cream on them and they become innocent. That's what our leader of the opposition and Congress president in the Rajya Sabha described, and which was later expunged as the BJP washing machine. So the raids, I don't know how long the raids will continue, but we are prepared. We will be, most of our leaders will be in Raipur on the 23rd and 24th, 25th and 26th. Our plenary session will be held. If anything, these raids have increased our determination. If anything, these raids have given us a booster dose to be even more aggressive against the Prime Minister and his third-rate politics of vengeance, vendetta, harassment. अरे यार, हिंदी का मैंने अंग्रेजी किया, अब यार निम्न स्तर की राजनीति। बंगाली में बोलूं? बंगाली। आपने कहा कि 3010 छापे मारे गए। He has more details on that big story, Sumi. Big argument there from the Congress. They've been saying that this is vendetta, an attempt to divulge the attention or divert the attention really from the Adani issue, the Adani crisis. The BJP is rattled. Yes, absolutely, Sneha. We heard the allegations that are being leveled by the Congress top brass, and in fact they have said that it is politics of vengeance. It is a cheap politics that is being resorted to by the Bharatiya Janata Party, and in fact Enforcement Directorate, as we speak, the various teams of Enforcement Directorate has been raiding several properties of the Congress legislators and office bearers since 5 a.m. in the morning, and in fact 14 such locations in the state are being raided. However, this development is also coming days ahead of the plenary session, which is also scheduled from February 24 to 26, with over 10,000 Congress functionaries would be in attendance, and they would in fact participate in the event. And amid such a high voltage plenary session, or rather a week before the plenary session, the ED raids are being undertaken in the capital, Raipur, as well as the adjoining district of Durg. In fact, premises of some senior leaders, spokesperson and legislators are being raided, and which is why from people aware of the entire development, we're also getting to know that a joint press conference will be addressed by Chief Minister Bhupesh Baghel, the Chhattisgarh in charge Kumari Shailja, and the PCC chief Mohan Markam at Rajiv Bhavan, which is the Congress headquarters in Chhattisgarh. And in fact, the Congress workers will also be घेरावing the state ED office at 4 p.m. this evening, and that would be interesting to see. But we have also heard reactions from the BJP, and they have their guns blazing at Congress, saying that Congress has a lot of corruption, and certainly it is going to be very important. All of these developments are coming in the year
or rather months ahead of election. And this is not the first time the ED has conducted raids. In fact, ED has conducted... We have news just coming in. Let's go straight to the Prime Minister, in fact. वाले कॉमन सर्विस सेंटर्स में भी हजारों युवा काम कर रहे हैं। साथियों, जैसे जैसे उत्तराखंड के दूर सुदूर के इलाके रोड, रेल और इंटरनेट की कनेक्टिविटी से जुड़ रहे हैं, वैसे वैसे टूरिज्म सेक्टर का भी विस्तार हो रहा है। नए नए पर्यटन स्थल टूरिज्म मैप में आ रहे हैं। इसमें उत्तराखंड के युवाओं को वही रोजगार घर के नजदीक मिल रहे हैं जिसके लिए वे पहले बड़े शहरों का रुख करते थे। मुद्रा योजना टूरिज्म में रोजगार और स्वरोजगार को बल देने में बहुत मदद कर रही है। इससे दुकान, ढाबे, गेस्ट हाउस, होम स्टे ऐसा व्यवसाय करने वाले साथियों को 10 लाख रुपए तक का ऋण बिना गारंटी के मिल रहा है। पूरे देश में अभी तक 38 करोड़ मुद्रा ऋण दिए गए हैं। ये ऋण पाने वाले लगभग 8 करोड़ युवा पहली बार उद्यमी बने हैं। इसमें भी महिलाएं, एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के हमारे साथी, उनका हिस्सा सबसे ज्यादा है। उत्तराखंड के हजारों साथी भी इसका लाभ ले चुके हैं। साथियों, भारत के युवाओं के लिए ये अद्भुत संभावनाओं का अमृतकाल है। आपको इसे अपनी सेवाओं के माध्यम से निरंतर गति देनी है। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप उत्तराखंड के लोगों की उत्तम सेवा करेंगे। उत्तराखंड को आप उत्तम बनाने में योगदान देंगे और इससे हमारा देश भी सशक्त होगा, समर्थ होगा, समृद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। The Prime Minister speaking at the Rozgar Mela, offering jobs as is what been promised by the government for months now. This is a scheme that the government has been working at in terms of generating employment. The Prime Minister himself has been the face of this campaign as far as the Rozgar Mela is concerned. We have some news just coming in. Well, the Eknath Shinde camp has taken over the Vidhan Bhavan office of the Shiv Sena. The Sena versus Sena symbol war has intensified. Shinde has taken the Vidhan Bhavan office of the Shiv Sena, saying that we are the real Sena. This confidence comes after the election campaign commission, in fact, gave the bow and arrow symbol to the Eknath Shinde faction. Shinde has taken over the Vidhan Bhavan office of the Sena, and this comes at a time when the election commission awarded the bow and arrow symbol to the Eknath Shinde camp. Remember, Uddhav Thackeray has moved Supreme Court talking about this entire issue, raising this matter. However, there is not going to be any urgent listing on this issue. This is going to take over, in fact, take the shape of a legal battle between the two Sena factions now, with Uddhav Thackeray moving court. Right now, we have pictures coming in of Eknath Shinde along with supporters taking over the office of the Shiv Sena. This is the Vidhan Bhavan office of the Sena that Eknath Shinde and his camp has taken over. It's a setback to Uddhav Thackeray after the election commission said that the election's bow and arrow symbol belongs to the Eknath Shinde faction.
Shinde, in fact, has said that MPs and MLAs are with him. So the real Sena is Eknath Shinde, and Uddhav Thackeray is the one who strayed away from the party. Hrithik is getting asked more details on that story. Huge setback there for Uddhav Thackeray. The optics of it also, Hrithik, even as we wait for the Supreme Court to now look into this matter, is terrible for Uddhav Thackeray, isn't it? Yeah, this is the next major step taken by Shinde faction's Shiv Sena. Chief Whip Bharat Gogaole of the Shinde faction has now claimed the official party office in the Assembly of Maharashtra, and they are going to submit a letter regarding this to the Assembly Speaker. And tomorrow, CM Eknath Shinde will be addressing an national executive meet of the party, which will include all the MLAs and MPs of the party, and they will officially declare that now the status of the party is claimed by them, both in the organizational structure and also in the assembly structure. The battle of course, Hrithik, is going to play out in the Supreme Court as well. First the symbol, now the office. The Thackeray faction, Uddhav Thackeray faction, is going to raise this. I was asking you that this matter is going to also play out in Supreme Court. First the symbol and now the office. How do you know about the Uddhav Thackeray faction now raising this particular issue about the taking over of the office in Supreme Court? See, Uddhav Thackeray has also called an urgent meeting of all his senior leaders and district heads today at 12 p.m. in Sena Bhavan. He'll be meeting all his Sena leaders and discussing the further course of the plan, and he will be opposing it obviously in the Supreme Court. But in the Assembly, now that Shinde faction's Shiv Sena has claimed the party office, we need to see that what the chief whip of Uddhav Thackeray's camp is going to do. Is he going to object it? Is he going to submit another letter to the Assembly Speaker and claim the office back? Because in last session, winter session in Nagpur, we saw that the party office of Shiv Sena was officially given to Shinde faction. At that time, they did not retain the official status of the party, but now, after Election Commissions of India's decision, they have officially claimed the status, and I think now there will be a big war between both the factions in the Assembly. We're getting all the details from Hrithik as far as the optics of this is concerned. First the symbol, now the office. As far as the Uddhav Thackeray camp is concerned, they pretty much have, at least optics-wise, also lost out. And their only resort, Hrithik, really is on what the Supreme Court has to say on why the bow and arrow symbol were taken away and given to the Shinde camp. This is something that the court is going to analyze and look at. The legacy battle is on as far as Bala Sahib Thackeray is concerned. Who is the real Senapati? That's the big question before the Supreme Court of India, as the Election Commission awarded the bow and arrow symbol to Eknath Shinde. A victory for the Shinde camp, and also for the BJP have aligned with Shinde camp to form the government in the state of Maharashtra. So it's a setback. However, the BJP says this is all of your doing, not us. It was Uddhav Thackeray who betrayed the BJP and joined hands with the Congress and the NCP. So it's not our problem, it is your problem. What about the strategy of the Eknath Shinde camp? Convinced the Supreme Court that the Sena actually never really split. It only changed the leader from Uddhav Thackeray to Eknath Shinde. Show Uddhav straight from the Sena ideology. Also wipe out on ground footprint of Uddhav camp. Complete takeover of Sena, dealing with Uddhav Thackeray. Woo friends sitting Sena MPs and MLAs
get them to join the Eknath Shinde camp and take over powerful Sena shakhas in the cadre. The most important bit, get the ground workers to join the Eknath Shinde camp of the Shiv Sena. Focus on immediate challenge of the BMC elections. That's going to be crucial as this matter then now plays out in the Supreme Court of India. With that, it's time for a quick commercial break here. We'll continue to track that story and much more in just a bit. You are watching India Today. जैसे सबसे तेज आपकी टैगलाइन है, तो इसी तरह से सबसे तेज हमारी सरकार की लाइफलाइन है. Leader must have a vision. We will continue to work with the developing and the developed world for win-win solutions. Nature had of course willed the survival of the fittest. हम आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को अपनाए हुए हैं. एक साल के अंदर राहुल कन्वर की कार जो होगी वो इलेक्ट्रिक की होगी. There is a confrontation of competing visions. Amid strained ties with China over the Chinese spy balloon, U.S. Secretary of State Antony Blinken met his Chinese counterpart Wang Yi. Blinken directly spoke about the unacceptable violation of international law by China. He also raised the Russia-Ukraine war during the meeting. North Korea has fired a long-range ballistic missile which landed into the sea of Japan's western coast. This comes after a warning of strong response to the future military drills by United States and South Korea. As per Japanese authorities, the missile was pushed inside Japan's exclusive economic zone after it was launched. Iran President Ibrahim Raisi has wrapped up his symbolic visit to China. According to media reports, Iran and China have signed an agreement worth $3.5 billion. Raisi's visit marked the first state visit by the Iranian president to Asia's economic hub in 2 decades. The US has claimed that Russia's Wagner mercenary group has suffered more than 30,000 casualties since Moscow's invasion of Ukraine last February. About 9,000 of those fighters killed in action. The US has estimated 90% of the Wagner group fighters killed in Ukraine since December 2022 were convicts. The death toll due to earthquake in Turkey and Syria has reached 46,000 mark. Search and rescue operations are still continuing with the hope of finding more survivors. Miraculously, 3 people were rescued alive from under the rubble after 13 days.
Bonnie Kapoor took to social media to announce that the biography on his late wife and actress Sridevi is in the works and will release later this year. Speaking about the same, he called his late wife a force of nature. Titled as The Life of a Legend, the book will feature the key aspects of Sridevi's life and career. It will be published by Westland Books. The actor had passed away in 2018, leaving a void in the industry. And on her 5th death anniversary, her popular film English Winglish is set to release in China. The drama marked Sridevi's comeback to films after a long hiatus of 15 years. English tuition? I can come in? You may not. You need to ask, may I come in? English Winglish had gone on to become India's official entry to the Academy Awards in the Best Foreign Language Film category for 2013. The story of the film revolved around a housewife who decided to take up English lessons in the US after being mocked by her husband and daughter. She was born to make laddu. I, Shashi, from the India. No, Sashi, not from the India, from India. Why India, not the India? Why America, the United States of America? In her illustrious filmic career, Sridevi had acted in as many as 300 films. India gets its first ever transgender ward. The GT Hospital in Mumbai has opened a facility exclusively for the community. The ward has 30 beds with separate examination and dressing rooms and has gender-neutral toilets. What happens is, of course, if it's a patient is critical, for example, if he needs an ICU, if he requires a surgery, then in these places there is no gender division. So these patients will have to go there. But for other things like nebulization, CPAP, so all that will happen under one roof. GT Hospital has trained more than 150 staff members to sensitize them on providing medical treatment to transgender patients. We've taken the help of transgender community in developing the ward. What are your needs? In that context, we actually had sensitization of around 150 of our own employees to know how to, be sensitive to their needs, to their issues. The hospital authorities say their initiative is a step in the direction of making India more gender inclusive. With Dev Kotak in Mumbai, Bureau Report, India Today. are watching India Today. Welcome back. The shocker from Karnataka's Hassan, where a 20-year-old boy killed an e-car delivery person since he was unable to pay for an iPhone he had bought. He was arrested soon after CCTV footage emerged showing him both transporting the deceased cops and getting petrol filled at the pump. Datta killed delivery boy while he demanded 46,000 rupees to pay for the iPhone. The accused stabbed him multiple times as he didn't have any money. He kept the body for 3 days at his home and burned the body later to get away with the murder. On the 11th of Feb, a charred body was found near the Anchkopal railway station. 46,000 ರೂಪಾಯಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಐಫೋನ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಬೇಕು ಬಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅವನೊಬ್ಬನಿರೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅವರು ಸಹ ಪಾರ್ಸಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಆರೋಪಿ ಸಹ ಪಾರ್ಸಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಸಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಏನೋ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಹಿಂದಿಂದ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. Sagai Raj has more details on that story. Sagai, this is terrible. Usually an order of this nature, 46,000 rupees is something that an online payment is demanded each time someone purchases. But this happened to be a different sort of a case where money was being sought, of course, for the item that was purchased. But
Why did he do this is my question. You know, was this the accused a history sheeter? Has he done something of this nature before, and where are the investigations headed? The police have already arrested the accused in this particular case, and this particular accused did not have money, because that is the reason he has ordered a second-hand iPhone on e-cart, and when they try to deliver it, and that's when he has stabbed him from behind. He made him to sit there, saying that you will get the money from the house, and the delivery boy was on his was busy on his phone, and that's when he attacked from behind and stabbed him to death, and he kept the dead body for 3 days in his house. And after that, he goes to a fuel station, buys petrol, and takes the dead body in the vehicle and dumps near a railway station and burns the entire dead body. And the police, which was investigating, got access to the CCTV footage, and that's when they had detained him. And when they inquired, that's when he has revealed that he has murdered him just for a 46,000 rupees second-hand iPhone that he had ordered online. Just for 46,000 rupees, this young boy was murdered. Sahil, give us a sense of what the company in question is also saying in terms of offering support to the victim in this case. What about the family of the victim here? The family of the victim are completely shattered, because they had filed a missing complaint with the police station when he had disappeared on 7th of February. Remember, the incident happened on 7th of February. He kept the dead body till 11th, and on 11th night he has dumped the dead body near the railway station, and they are completely shattered when they got to know about this particular information from the police, that he was being killed just because of a second-hand iPhone where the accused were obsession of. On the other side, so far we haven't got any kind of statement from the online shopping portal on this particular incident, and we are waiting for it. Remember, this has not happened in Bengaluru. This has happened in Hassan district of Karnataka, a two-tier city, and even there is a delivery option available, and the accused had deliberately booked a phone via cash on delivery. Remember, even the accused is a delivery boy. He was working for a courier service, so he was quite aware the modus of operandi, how they're going to deliver, how they're going to pay the money, and all those things. That is the reason probably he has planned for this murder and killed him. I'm going to thank you for the moment, Sahil, getting us all of those details of that shocking murder that has now come to surface. Shocking revelations in the Nikki Yadav murder case now. The police during the interrogation have found out that Sahil's cousin, who's also a police constable, suggested him to keep Nikki's body in the fridge. Sahil, during the probe, told cops how Nikki kept dominating his mind even when he was getting married after the murder. All the 6 accused in the case knew that Sahil had killed Nikki and plotted how to keep this murder a secret. Also, in another shocking twist, the police have found that Sahil's father, who is in custody right now, was actually arrested for a murder. This was in the year 1997. He had beaten a man to death with sticks 25 years ago. Moving on, the alleged communal killing in Bhiwani has exploded on Sunday, claiming that the Rajasthan police have brutally assaulted the family of the accused. The Vishwa Hindu Parishad has now come out to show its support to the family of the accused. Not only called the police's behavior dictatorial, but also warned them to take appropriate action immediately. Take a look at this detailed report. Rajasthan communal cauldron boils over 2 alleged murders over cow smuggling charges. The Vishwa Hindu Parishad has now come out to back the families of arrested accused, who have claimed horrifying atrocities by the Rajasthan police. 9-month pregnant wife of one of the arrested accused claims she lost her unborn child after being battered by Rajasthan cops. उस दिन 4-5 गाड़ी आई थी और रात के टाइम आई थी, हम सोए हुए थे तो हम नींद में थे, गेट में धक्का मुक्की करिए, मेन गेट है उसमें सासू ने खोला वो गेट, उसमें सासू के लगी हुई है, सासू की गिरी हुई है, सासू को धक्का लगा हुआ है और अंदर हमारे गेट खोले हैं और फिर मैं गेट खोलने खड़ी हुई हूँ तो एकदम जोर से धक्का दिया, मेरे पेट में चोट लगी, उस दिन से परेशान हूँ मैं, उसी वजह आज मेरे बच्चा में इसको हो गया।
कितने महीने का बच्चा था आपका? फुल टाइम था। The VHP netas who met the accused family said they stand by them. राजस्थान पुलिस ने जिस प्रकार का व्यवहार किया है, साफ दिखाई देता है वो राजनीतिक दबाव में थी। स्क्रिप्ट किसी और ने लिखी। बराबर की दोषी है यहाँ की पुलिस भी, और इसीलिए आज जब वहां के SHO आए हैं तो उनसे कहा है आपकी गलती ठीक करने का यही एक मार्ग बचता है। Meanwhile, the Child Rights Panel has taken cognizance, saying it will probe the attack on the pregnant woman by Rajasthan police, leading to miscarriage. But the Rajasthan police has denied all the charges. हम तो मुलजिमों के घर भी नहीं जानते हैं, और जहाँ तक बात घर में घुसने की है, घर में भरतपुर पुलिस के नगीना पुलिस भी घर में नहीं गई थी। मुलजिम घर पर था नहीं, और उनके 2 भाई बाहर मिले थे, उनसे ज़रूर पूछताछ के लिए आए थे और उनको पूछताछ के लिए फ्री भी कर दिया। उनके औरतों के जहाँ तक मामला पुलिस पर झूठे आरोप लगा रहे हैं और मुलजिम है इसी दबाव में लगा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं तो नगीना पुलिस अंदर गई थी, नहीं भरतपुर पुलिस गई थी। The VHP action comes a day after AIMIM chief Asaduddin Owaisi met the families of the cow smugglers allegedly killed by cow vigilantes. अभी उनके परिवार के लोग हमको बता रहे थे कि फिरोजपुर झिरका का जो CI है, वहाँ की जो पुलिस है, वो तो पूरा इस गैंग के साथ मिली भी है। और उनके परिवार के लोग ये भी बता रहे हैं कि जिस गैंग ने जो 6 एक्यूज जो है, जिनको एलिज एक्यूज है, FIR में नाम है, वो इतना मारे जुनैद और नसीर को ले जाकर पुलिस स्टेशन में जब उनको दिए तो पुलिस ने इनकार कर दिया उनको लेने से। The Bajrang Dal also protested against the Rajasthan police for linking it to the crime. The victims Nasir and Junaid were allegedly abducted on Wednesday, and their bodies were found inside a charred car in Loharu in Haryana's Bhiwani on Thursday morning. Bureau Report, India Today. Well, clashes rocked Delhi's JNU once again, this time showdown over Shivaji Maharaj. ABVP activists accused the left-wing workers of vandalizing and insulting Shivaji. ABVP shared pictures of the portrait condemning this incident. Not only this, ABVP workers staged massive protests seeking action against left members. JNU Students' Union, on the other hand, have alleged that ABVP activists attacked some students, creating ruckus inside the campus. JNU wasn't the only flashpoint. BJP workers clashed with Telangana cops in Rangareddy district during Shivaji Jayanti celebrations. Scuffle broke out as BJP hadn't taken permission for this event. एबीपी के जेएनयू के स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। कल क्या हुआ था सर? देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जेएनयू के द्वारा वीर शिवाजी जी की जयंती, शिव जयंती के शुभ अवसर पर जेएनयू एसयू कार्यालय में, छात्र संघ कार्यालय में उनके चित्र का अधिष्ठापन किया गया था दीवार पे, और माल्यार्पण और पुष्प अर्पण किया गया था। लेकिन यह चीजें, ये राष्ट्रवादी चीजें और राष्ट्र से जुड़े हुए, जिनकी लोगों की आत्मा में वीर शिवाजी हैं, उनसे जुड़ी हुई चीजें इन वामपंथी गुंडों को बर्दाश्त नहीं हुई। वे लोग आते हैं और उनके चित्र को उठा करके फेंक देते हैं, बोलते हैं शिवाजी विवाजी नहीं चलेगा, यहाँ पर सिर्फ माओ लेनिन चलेगा, ये जेएनयू है। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ कार्यकर्ता वहाँ मौजूद थे, उन्होंने विरोध किया, क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों मेरे शिवाजी के साथ ऐसा कर रहे हो, यह मेरे ही नहीं पूरे देश के हैं शिवाजी, तो इनके चित्र को उठा करके मत फेंको। और उस पूरी घटना की मुख्य सूत्रधार एक लड़की है जो कि यहाँ के स्टूडेंट्स भी नहीं है। हम लोगों ने उसका वीडियो भी बनाया है, वह भी मैं आपको दूंगा, और पुलिस से भी मैं मांग करता हूँ कि उस पर अविलंब कार्रवाई हो। क्या आप लोगों ने पुलिस से शिकायत की? सर, कल जब घटना हमें आइडिया लगा कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो हम लोगों ने पुलिस को फोन किया और सूचित कर दिया था कि ऐसा होने वाला है। पुलिस आई, लेकिन कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई। जो घटना में मेन कल्प्रिट एक लड़की है जिसने ब्लू जैकेट पहना हुआ है, सबको जानकर आश्चर्य होगा कि वो जेएनयू के स्टूडेंट ही नहीं है, और कल के पूरे घटना चक्र का मेन कल्प्रिट वही है, उसी ने पूरे घटना चक्र को अंजाम दिया, और वो जेएनयू के स्टूडेंट ही नहीं है। एक आरोप ये भी है लेफ्ट विंग का कि बिना इजाजत के प्रोग्राम किया। सर, फोटो लगाना था, और फोटो किसी, हम लोग अफजल गुरु का फोटो नहीं लगा रहे थे, हम लोग वीर छत्रपति शिवाजी का फोटो लगा रहे थे, जो जिनके लिए इतिहास में, अगर आप इतिहास के पन्नों में जाए तो शायद कोई किताब कम पड़ जाए, उनका फोटो लगाना था, और वो भी स्टूडेंट कम्युनिटी सेंटर में। वहाँ पे
वो कम्युनिटी सेंटर पूरे के पूरे स्टूडेंट के लिए बना है। वहाँ पे हमें किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप देखेंगे तो जो उस लेफ्ट में पूरे के पूरे घटना चक्र को जिस लड़की ने अंजाम दिया वो स्टूडेंट ही नहीं है। हमारा भी ये एलिगेशन है कि वो लड़की स्टूडेंट नहीं है, तो उसे अंदर कैसे घुसने दिया गया। कितने छात्र घायल होंगे? हमारे 5-6 कार्यकर्ता घायल हैं। उनका इलाज सफदरजंग और एम्स में हुआ है। रात्रि में वो आए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन अब क्या कर रहा है? लगातार जेएनयू में दंगे हो रहे हैं। हाँ, पहले पत्थरबाजी हुई, अब और आज लड़ाई हुई। तो मेरा प्रशासन से सवाल है, यहाँ जो कॉमन स्टूडेंट्स हैं वो समस्या का सामना कर रहे हैं, उनको कुछ आप सिक्योरिटी नहीं दे रहे हो, लगातार लड़ाई कर रहे हो, पढ़ाई में लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो आप ये पॉलिटिक्स के अंदर, पॉलिटिक्स जेएनयू में अभी से नहीं हो रही है, विचारों की लड़ाई थी, इस समय हिंसा हो रही है। तो ये हिंसा कॉमन स्टूडेंट को बर्दाश्त नहीं है। दिल्ली पुलिस के यहाँ लगभग 50 लोग खड़े थे, वो कुछ नहीं कर रहे थे, यहाँ मुँह ताक के देख रहे थे। तो वो उन पर सवाल उठता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे? तुम लड़ाई करवा रहे थे। यहाँ हाथापाई हो रही थी, मैं देख रहा था, दोनों तरफ से हो रही थी, पता नहीं कौन मार रहा था। दिल्ली पुलिस के 50 लोग यहाँ देख रहे थे। Story and much more going up on our website too. That's indiatoday.in. You can also download the India Today app. News continues on the other side. Do stay on with us. You are watching India Today. Pulled 3 people out from under a mountain of rubble on Saturday, 12 days after a massive earthquake struck Turkey and Syria. This man, seen pinned beneath the wreckage, as well as his wife and child, were found alive in the collapsed building in Hatay, the southernmost province of Turkey. The rescue team said the father and mother survived, but the child later died of dehydration. An older sister and a twin did not make it. More than 46,000 people have been killed in the earthquake. The toll is expected to soar, with some 345,000 apartments in Turkey now known to have been destroyed, and many are still missing. Experts say most rescues occur in the 24 hours following an earthquake, and the head of Turkey's Emergency Management Authority said rescue efforts will largely be called off Sunday night. This Turkish bulldozer operator working to clear rubble said he tries to find happiness in finding victims' bodies so that families can hold a funeral. We are trying to find happiness from the saddest moment in their lives, he said. But for the families still waiting to retrieve relatives in Turkey, anger is growing over what they see as corrupt building practices and deeply flawed urban development that resulted in thousands of buildings disintegrating. In neighboring Syria, more than 5,800 deaths have been reported. The World Food Programme is pressuring authorities in the northwest to stop blocking access to the area as it seeks to help hundreds of thousands of people ravaged by earthquakes. The area is controlled by insurgents at war with forces loyal to Syrian President Bashar al-Assad. Public health is also a major concern, with medics and experts warning of a possible spread of infection in the area where thousands of buildings collapsed. With so much crucial infrastructure destroyed, aid organizations say the survivors will need help for months to come.
as the Ram Mandir rises in Ayodhya, Uttar Pradesh. In Karnataka too, the Bommai government is on a temple run. Just ahead of the assembly polls, the Chief Minister announced the construction of a majestic Ram temple in Ramnagara. The big announcement was made in the budget speech on Friday. The temple will be built across 19 acres in Ramadevara Beta on the lines of the Ram temple in Ayodhya. Considering the importance of Rama, during his exile, he has lived in Ramnagara, Ramadevara Beta. It is very important historically and for all good reasons, since it has been named as Ramanagara after Rama. Has presented an excellent budget with a long term of development forecast for the year 2023-24. Several measures has been taken in this budget to double the income of farmers as desired by our party. Many schemes have been proposed for the development of the poor, weaker sections, women, oppressed and youth of the state. The opposition Congress is not impressed, claiming that it has constructed many temples in the state already. One was expecting that this being the last budget, signing off budget, the Chief Minister and the government of the day will do some repenting of the last 4.5 years. But sadly, this government has remained and does remain still a 40% government. This election season in Karnataka appears to be Ram ke naam. Bureau Report, India Today. Gift well with Sleep Well. Here's a big breaking on India Today. Let me take you through India Today accessing this exclusive detail of Uddhav Thackeray camp and their plea before the Supreme Court. Uddhav camp seeks a stay of the Election Commission's order before the Supreme Court. In fact, the bow and arrow symbol was given to the Shiv Sena, and it appears that Uddhav Thackeray and camp, sour and angry, reaching out to the Supreme Court with a plea. India Today accesses that plea, a big attack at the Election Commission by Uddhav Thackeray camp before the Supreme Court. Uddhav camp says that the Election Commission has failed to discharge its duties as a neutral arbiter. Uddhav camp alleges that the Election Commission of India has acted in a manner that's undermining constitutional status. The plea now states that the matter is still pending before the top court and no action can be taken on the Election Commission of India and their order that's given. The plea there further says issues before the EC and the Supreme Court are intertwined. Uddhav Thackeray camp before the Supreme Court in its plea says the Election Commission of India has erred in passing the order. ECI cannot rely on legislators who are under the cloud of disqualification. This is more or less Uddhav's plea at the Supreme Court at this point. They are reaching out to the Supreme Court to try and change the order, what the Election Commission has given, granting the bow and arrow symbol to the Shiv Sena. Uddhav Thackeray says Election Commission acting unconstitutional. This is more or less that sums up in that plea before the Supreme Court. All right, here's quickly cutting across to this exclusive conversation with India Today. Former Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari speaking to Sahil Joshi. Let's have a listen.
पिछले 2.5 साल में महाराष्ट्र की राजनीति में जो उठापटक रही उसके वजह से महाराष्ट्र की राजनीति एक तरीके से बदल चुकी है। इस पूरे उठापटक के बीच में जो सारी कंट्रोवर्सीज रही उसके केंद्र में कई सारे लोग रहे, लेकिन इतिहास में पहली बार महाराष्ट्र के राज्यपाल की भूमिका की बहुत ज्यादा चर्चा रही। कभी उन्होंने ऐसा लगता है कि सोच के कुछ चीजें की, कभी लगता है कि किसी आदेश पर ये सारी चीजें हो रही थी, लेकिन आखिरकार पिछले 2.5 साल में जब भी कंट्रोवर्सी रही उन्होंने कभी भी इस बात पर अपनी बात लोगों के सामने रखने की कोशिश नहीं की। तो जो मैन इन द सेंटर ऑफ द कंट्रोवर्सी जो महाराष्ट्र में रहे हैं वो भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल। उनसे हम आज सीधी बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 2.5 साल में जो भी महाराष्ट्र में रहा उसमें उनकी भूमिका क्या रही, किस तरीके से उन्होंने ये पूरा घटनाक्रम को देखा और उनकी अपनी राय इस पूरे मामले को लेकर क्या है, उनकी भूमिका इस पूरे मामले को लेकर क्या है। कोश्यारी जी, आप सितंबर 2019 में महाराष्ट्र में आए थे और तब लग रहा था कि जो जैसा है वैसा ही होगा। 2014 से 19 तक फडणवीस शिवसेना की सरकार चल रही थी, बीजेपी शिवसेना की चुनाव में कोई ज्यादा उठापटक की गुंजाइश नहीं थी और दोबारा फडणवीस चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे यही बात लग रही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। स्थिति अचानक बदल गई और उसके बाद से लगातार कंट्रोवर्सीज में रही। आप जब आए तब आपने सोचा था कि आपको इस तरीके से कंट्रोवर्शियल स्टेट में जाना पड़ेगा जहां पर पॉलिटिकल सिचुएशन पूरी तरीके से विपरीत होगी और आपको उसको फेस करना पड़ेगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि मुझे 3 साल 4 महीने महाराष्ट्र जैसे एक बड़े प्रदेश में रहने का अवसर मिला और ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विश्वास था कि मैंने उनके सामने भी कहा है कि मेरी इच्छा न होते हुए मैं आपका सम्मान करता हूं और महाराष्ट्र जैसे संतों के प्रदेश को देवभूमि से जाकर के बिना संतों के देव संतुष्ट भी नहीं होते और इसलिए संतों की भूमि में जितने दिन सेवा करने का मौका मिलेगा अच्छा लगेगा। तो इसलिए सौभाग्य था कि उनके शुभेच्छा से मैं महाराष्ट्र पहुंचा और पहुंचा तो स्वाभाविक है कि राजनीति कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि वहाँ 2 दूनी 4 ही होता है। राजनीति में 2 दूनी 5 भी होता है, 2 दूनी 3 भी होता है। इसलिए जो महाराष्ट्र में हुआ वो केवल अकेले महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है, ये अनेक प्रदेशों में समय समय पर होता है। मैं लंबे समय से राजनीति को देख रहा हूँ, भले ही मैं राजनीति में बहुत देर में आया, मैं प्रत्यक्ष राजनीति में बहुत देर में आया, लेकिन फिर में। तो इसलिए ये कहना कि ये आपने पहले क्या सोचा, पहले सोचा जितना होता है उतना ही हमेशा होता नहीं है। और हम जहाँ भी कहीं भी जाते हैं हमारा एक ही सिद्धांत है, होप फॉर द बेस्ट, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। और इसलिए हम होप फॉर द बेस्ट करते हैं, हम हमेशा आशावादी हैं और इस नाते से महाराष्ट्र गए और जो सेवा हो सके की। और आपने एक ही चीज का कंट्रोवर्सी और आप महाराष्ट्र में जनमत संग्रह कराइए, तो मैं सोचता हूँ कि आपको भगत सिंह के चाहने वालों से ज्यादा मिलेंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है कि राजभवन आपके समय पे लोगों के लिए खुल गया था। मतलब जितने पब्लिक गैदरिंग्स आपने की होगी शायद ही किसी राज्यपाल ने की होगी, ये तो हम सारे देखते हैं। लेकिन फिर भी महाराष्ट्र में गवर्नर कभी भी इतने कंट्रोवर्सी में नहीं रहे। खास करके हमने देखा कि उसकी शुरुआत, मतलब आपके आने के 3 महीने में इसकी शुरुआत हो गई। 2019 में नवंबर महीने में जो जिसे कहते हैं ना तड़के शपथ ग्रहण किया गया, देवेंद्र फडणवीस अजित पवार का शपथ ग्रहण हुआ। एक रात में महाराष्ट्र में जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो हट गया। और ये कमाल कैसे हो गया, उसके वजह से आपकी भूमिका पर सवाल उठाए गए। देखिए, राजनीति में जब मैं नहीं रहूंगा बहुत से लोग न रहेंगे और जो असली राजनेता है, जो चिंतक है, विचारक है, तो वो सोचेगा कि आखिर एक रात में सब कैसे हुआ। और कभी कभी तो ऐसी चीजें एक पल में होती है। तो आपने एक रात की बात कही है, ये समाज जो है एक पल में भूकंप आ जाता है, क्या होता है, किसने कहा कि एक रात में हो गया। ये तो स्वाभाविक है कि भाई हमारे पास कोई बड़े दल का नेता आता है और उसके साथ एक सहयोगी दल कहता है ये सब मेरे उनके दस्तखत है, हस्ताक्षर है और शाही से कहे हुए हैं और विश्वसनीय नेता है।
वो छोटा मोटा भी नहीं है। अजित पवार जी कोई छोटे मोटे नेता नहीं वहाँ के हैं। वो हमसे आते हैं, हम कहते हैं हमने कहा ठीक है तुम्हारा बहुमत है तो सिद्ध करो। हमने सिद्ध करने का टाइम दिया। हो सकता है कि वो समय कुछ ज्यादा रहा होगा, बाद में कोर्ट ने कहा कम करो, ठीक है कम करो, कम कर दिया। बहुमत करने में समर्थन नहीं थे, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। तो ये तो सामान्य सी बात है। नहीं, लेकिन फिर भी जिस तरीके से कहते हैं ना छुप छुपा कर शपथ ग्रहण हुआ, किसी को पता नहीं था। ये आमतौर पर शपथ ग्रहण होता है तो मीडिया को बुलाया जाता है, आमंत्रण दिया जाता है। आप ध्यान दीजिए कि ये राज्यपाल कोई लोगों को बुलाता नहीं है। ये कोई राज्यपाल सारे काम नहीं करता है, ये गवर्नमेंट करती है। और जिसको शपथ लेनी होती है वो करता है। तो उनको एक सेकेंड, और जो कुछ भी हुआ उस सब में मुझे लगता है कि जिसको मैंने शपथ दिलाई श्रीमान देवेंद्र फडणवीस ने, उन्होंने अपना बयान संबंध में ऑलरेडी दे चुका है। और मुझे लगता है कि उस बयान के बाद मैं बीच में आता हूँ। नहीं सर, अभी आप राज्यपाल नहीं है, अभी आप खुलकर बात कर सकते हैं। खुलकर क्यों तो कर रहा हूँ। उसपे ये चल रहा है कि शरद पवार को इसकी जानकारी थी कि नहीं थी। अचानक जब 3 दल आपस में बैठ के बातचीत कर रहे हैं तब शरद पवार का कहना था कि अगर इस तरीके का शपथ ग्रहण नहीं होता तो हो सकता है कि राष्ट्रपति शासन नहीं हटता। यहाँ पर बीजेपी राष्ट्रपति शासन हटने नहीं। इफ एंड बट हो सकता है शरद पवार जैसे इतने बड़े आदमी अगर इफ एंड बट पर चलते हैं तो मैं कहता हूँ फिर तो उनको हाईकोर्ट में जो लवासा का मामला उसी पर 10 बार विचार करना चाहिए। उनके बारे में जो हाईकोर्ट ने बोला है, वो इतने बड़े आदमी है, उनका मैं इतना सम्मान करता हूँ। मैं उनको 2 बार डिलीट की उपाधि दिला चुका हूँ अपने विश्वविद्यालय में, मेरे हाथ से डिलीट की उपाधि ली है। वो उनका मैं बहुत आदर करता हूँ। तो वो अगर ऐसा बोलते हैं तो पॉलिटिकली बोलते हैं, पॉलिटिकली ही फ्री टू स्पीक एनीथिंग। नहीं, लेकिन फिर भी कैसा है ना कि उसमें कहा यह जा रहा है कि वो राष्ट्रपति शासन हटने, और सुप्रीम कोर्ट ने आपने सही कहा कि आपने जो समय सीमा दी थी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ये कम करनी चाहिए। आप उनको मौका दे रहे हैं विधायकों को खरीद फरोख्त करने का, इस तरीके का उनका ये कहना है। तो क्या आपको लगता है कि राज्यपाल के नाते आप पर ये दबाव था कि आपको इस तरीके से समय देना चाहिए, ये इस तरीके से करना चाहिए? आप अगर भगत सिंह कोश्यारी के तौर पर सोचते तो नहीं करते शायद। देखिए मेरे पास ऐसा कोई दबाव नहीं था, पर कोई दल शपथ लेता है वो कहता हमको थोड़ा समय दे दीजिए, हमें करना है, तो हमने समय दे दिया। स्वाभाविक लोग कोर्ट गए, कोर्ट ने कहा जल्दी करो, हमने जल्दी कर दिया। हम का बीच में आते हैं सुनो, फिर लोग बोलते हैं रात पूरा आपका मीडिया रात बोलता रहा। सुबह 8 बजे शपथ हो रही है और आज तक दुनिया में आप लोगों ने फैला रखा कि साहब रात में शपथ हुई। नहीं, शपथ तो सुबह हुई। देखिए पहले जो रात का कालखंड रहा कि जैसे कोई एक लेटर लेके आता है, क्योंकि हम लोग सब लोग थे जहां पर कांग्रेस एनसीपी शिवसेना की मीटिंग चल रही थी, वहां से अजित पवार निकलते हैं 9 बजे के करीब देवेंद्र फडणवीस के पास पहुंच जाते हैं और रात भर में राष्ट्रपति शासन हट जाता है। साहिल जी आपने तो एफिशिएंसी के लिए मुझे बधाई देनी चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए कि आपने इतनी शीघ्रता से सब काम किए। आप लोग तो उल्टा आलोचना करते रहते हो। मेरी दिक्कत ये थी कि मैं राज्यपाल था, इस सब बात आपसे बोल नहीं सकता था। सर एफिशिएंसी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग को लेकर नहीं होनी चाहिए, एफिशिएंसी सब चीजों में होनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। एवरीवेयर मैंने हर जगह एफिशिएंसी देखा है। मेरे जितने मैंने काम किए हैं, अगर आपने एफिशिएंटली काम नहीं किए हैं तो बता दो। ठीक है, मैं उस पर आना चाहता हूँ। उसके बाद सरकार बन गई। आमतौर पर हमने देखा है कि ये सवाल तो हमने कई लोगों से पूछा है कि जहां पर विपक्ष की सरकार है वहां पर राज्यपाल और विपक्ष की सरकार के बीच में तलवारें खींची रहती है। हमने बंगाल में देखा, ठीक है, महाराष्ट्र में भी हमने देखा। हो सकता है कि आप तैयारी के साथ नहीं आए हो इसके लिए, लेकिन आप खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आपने ऐसा कोई पद नहीं है जिस पर काम नहीं किया। आप लोकसभा के सदन में रह चुके हैं, राज्यसभा में रह चुके हैं, विधान परिषद में रह चुके हैं, विधानसभा में रह चुके हैं। आपने जिस तरीके से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को खत लिखा था जब महाराष्ट्र में धार्मिक स्थल बंद थे, आपने कहा था कि आप क्या सेक्युलर हो गए, आपने क्या हिंदुत्ववाद छोड़ दिया है। क्या कोई भी राज्यपाल इस तरीके से राजनीतिक तरीके से खत लिख सकता है? क्या उस पर काफी सवाल उठाए गए? उस पर मैंने पहले बता दिया कि उस पर गृह मंत्री जी का बयान आ गया कि हमको संयम बरतना चाहिए। ये बयान ऊपर से आ चुका है, तो मुझे लगता है कि जब गृह मंत्री ने कह दिया एक बयान, उसके बाद हमारा बोलने का तो कुछ रह नहीं जाता। कहा जाता है कि खत आपका था लेकिन शब्द किसी और के थे। जो भी है, नहीं शब्द किसी के नहीं, नथिंग। ये भगत सिंह के साथ जो आपने बोला वो आपने ही बोला, जो मैंने बोला होगा किसी कारण से बोला होगा तो वो हो सकता है उस समय के लिए समीचीन न हो, और इसलिए बजाय मेरे स्वयं गृह मंत्री का बयान आ गया कि थोड़ा संयम रखना चाहिए। ओके, ठीक है।
नहीं, इसीलिए तो बार बार आरोप लगे ना कि ये राज्यपाल नहीं भाजपाल है, यह राजभवन नहीं भाजपा भवन हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय हो चुका है। इस तरीके के आरोप महाराष्ट्र में खास करके कभी भी राज्यपाल, आप तो उत्तर प्रदेश, पहले तो यूनाइटेड उत्तर प्रदेश से आते थे, आपको याद होगा कि जब उत्तर प्रदेश में सरकार की उठापटक हुई थी तब राज्यपाल की भूमिका पर आप ही लोगों ने काफी सवाल उठाए थे। आज की स्थिति में आप पर भी उसी तरीके से आरोप लगे, क्योंकि इस तरीके का लेटर लिखना या सरकारी अधिकारियों की मीटिंग लेना। शरद पवार ने आपके बारे में शिकायत कर दी थी प्रधानमंत्री। पहले ये बताइए जी कि राज्यपाल जी क्या सरकारी अधिकारी से बातचीत नहीं कर सकता? क्या राज्यपाल जहां जाते हैं सरकारी अधिकारी उनका स्वागत नहीं करते? क्या प्रोटोकॉल में सब आता नहीं है? जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट की कोई विशेष बैठक है, उन्होंने कहा कि नहीं करनी चाहिए, और ठीक है, वेल एंड गुड। उनके मंत्री चाहते थे हम सीखेंगे, आप करें तो अच्छी है, उनको नहीं लगा, अच्छा हमने कहा नहीं कहा, एक हमने छोड़ दिया मीटिंग लेना। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि लगातार मेरे पास अधिकारी आते, जिले में जाते थे, 4-6 अधिकारी आते थे, उनको माता करता था, मेरे बोलते साहब का अनुभव है और आप यहाँ हैं, बातें हैं, लोग मेरे पास इतने आते हैं, अपनी समस्याएं बोलते हैं। अब आप बताइए, जब मेरे पास रोज 200-500 लोग आ रहे हैं, मिलने आते हैं, अपनी बातें बोलते हैं, क्या मुझे लोगों की बात सुनने के बजाय केवल जो कोई नेता कह रहे हैं किसी दल के या किसी भी दल के, चाहे शासकीय हो चाहे विरोधी दल के, उनकी बात को सुनना चाहिए, जनता जनार्दन की बात सुननी चाहिए? नहीं, लेकिन आपके सहदयाय, मतलब सदन में आपके साथ जो रहे, शरद पवार हो या संजय राउत हो या कई सारे विपक्ष के जो सांसद हैं, वो आपके साथ में उन्होंने काम किया हुआ है, सदन में आपके साथ में काम किया हुआ है। उनका ये कहना था कि उन पर, वो सीधा आप पर आरोप लगाते थे कि भगत सिंह कोश्यारी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को राजभवन से बैठकर चला रहे हैं। जो भी महाविकास आघाड़ी सरकार पर या उद्धव ठाकरे पर निशाना साधता है, कंगना राणावत हो या कोई भी हो, उन्हें राजभवन में बुलाया जाता है, स्वागत किया जाता है, उस तरीके से उनको आप ध्यान रखें कि राजभवन में कोई सरकार के पक्ष में बोले विपक्ष में बोले, राजभवन हर किसी का। राजभवन कोई सरकार का खरीदा हुआ है क्या? कोई किसी सरकार का राजभवन नौकर है क्या? राजभवन को सबको देखना होता है, इसलिए कोई भी आता है उसके लिए हम बोलते हैं, क्या दिक्कत है? लेकिन क्या हमने कोई सरकार की विरोध तो किया नहीं? हमने किसी सरकार के खिलाफ तो एक पत्र के बारे में आपने जिक्र किया, मैंने कहा कि ठीक है, उसके बारे में बयान आ चुका है, बस। पर आपको खेद है कि वैसा लेटर लिखने का, इस तरीके से लेटर देखिए, जहाँ एक बड़े व्यक्ति ने कह दिया संयम बरतना चाहिए, खत्म हो गई बात, आगे बोलो। क्या आप किसी ब्रीफ पर काम कर रहे थे? आप पर कोई दबाव था कि बीजेपी, आप इतने सालों से बीजेपी से? भाई साहिल, जो दबाव की तो बात ही मत बोलो, भगत सिंह पर को दबाव होता है क्या? कभी दबाव देखा आपने मेरे ऊपर? तो कहाँ से दबाव होता है, किसका दबाव होता है? वही चीज अब जो सरकार का उठापटक हुआ, अभी एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार महाराष्ट्र में आ चुकी है। मुझे याद है कि उससे पहले महाविकास आघाड़ी सरकार में स्पीकर का चयन करना था, और हाईकोर्ट में हालांकि बीजेपी के विधायक गए हुए थे कि स्पीकर का चयन नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्पीकर के लिए जो नियम बनाए हुए हैं वो सरकार ने चेंज किए हुए हैं विधानसभा में। आपने ये कारण, और हाईकोर्ट में उनको फटकार लगाई कि ये सब गलत है, स्पीकर का चयन होना चाहिए, राज्यपाल स्पीकर का चयन का डेट दे दीजिए। वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्होंने सिर्फ मेंशन किया था, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, इसके लिए स्पीकर का चयन नहीं हो सकता। जैसे ही शिंदे फडणवीस सरकार आ गई, उसके बाद तुरंत उनका शपथ ग्रहण हुआ और तुरंत आपने कहा कि सबसे पहले स्पीकर का चुनाव होना चाहिए। ठीक है। जो सवाल यहां पर यह उठता है कि आपका रवैया महाविकास आघाड़ी के बारे में और बीजेपी और शिंदे के बारे में एक बायस्ड रवैया था। आपको जब सूट हुआ तब आपने ब्रीफ, आपने जो कहा ना कि तुरंत फैसला लेने वाला, और जब आपको सूट नहीं हो रहा था तब आपने फैसला लेने से इनकार कर दिया। नहीं, देखिए, आपको पता नहीं, आप मेरे एक पत्र की बात बोल रहे थे जी, पत्रों की बात बोलूं आपको मैं जी, है, आप आगे आएंगे उस पत्र, उस विषय पे बारे में तब बोलूंगा जी। जब मुझे कहा गया कि मैंने जब कहा कि विधानसभा अध्यक्ष का चयन करो संविधान के हिसाब से, महाराष्ट्र के असेंबली रूल के हिसाब से, तो उन्होंने कहा अभी हम तैयार नहीं है। ओके, वेल एंड गुड, ठीक। अब आपको जब विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है, आपने अपनी आपकी परिस्थिति के अनुकूल हो गए हो, आपने कहा, तो आपने सारा अपना विधेयक ही चेंज कर दिया है। तो बट हाईकोर्ट ने एक मिनट, आपने विधेयक पर चेंज कर दिया, सब मुख्यमंत्री करेगा, ये फलां करेगा। आप ये बताओ कि मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर विधानसभा अध्यक्ष के अंडर होता है, ध्यान रखेगा,
तो हाउ कैन ही प्रपोज कि भाई हाँ ये हम ये कराते हैं, ये काम सुनिए, काम ये है। तो पहली बात। दूसरी बात, जो पत्र उन्होंने लिखा वो क्या किसी मुख्यमंत्री को, किसी राज्यपाल को, जो एक गरिमामय पत्र है उसे, हमारी एक बात तो था, हमने पत्र ऐसा लिखा बोल दिया, लिखना चाहिए था कि आप इसको बिफोर 6 PM इसको हमको आदेश करिए, अनुमति दे दीजिए, स्वीकार कर लीजिए। क्या कहीं राज्यपाल को ऐसा लिखा जाता है कि दिस टाइम, ये कहाँ लिखा है ऐसा कि इतने पीरियड के अंदर करो? अब 12 मिनट से मैं एकदम और बोलूंगा आपको, ठीक है नहीं? तो कहाँ लिखा है ऐसा? और राज्यसभा को समन करने का, विधानसभा को समन करने का, ये और प्ररोग करने का ये अधिकार राज्यपाल का है। जिसका प्रिविलेज है उसका है। आप पढ़िएगा तब देखेगा तब मुझे बताइएगा। खाली बाहर बोलने का ठीक है, उनकी जगह उनकी जगह दूसरी पार्टी वाले वो भी बोलते हैं, परंतु नियम क्या है कि प्ररोग करना। सुनिए, वही नियमों के आधार पर नए स्पीकर का चयन हुआ है, हो गया। वही नियमों के आधार पर नए स्पीकर का चयन हुआ है ना? और पहले आपने बोल दिया कि नहीं, स्पीकर का चयन नहीं हो सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है। ठीक है, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग था, फिर भी चयन किया गया ना। अब सुप्रीम कोर्ट का, मैंने कहा विषय सुप्रीम कोर्ट का था, विषय नहीं है। विषय है कि आप जो भाषा लिख रहे हैं, कारण तो आपने सुप्रीम कोर्ट का ही दिया था। नहीं, वो तब सुप्रीम कोर्ट का कारण दिया होगा, लेकिन जो असली कारण है वो कारण ये है कि आप वो विधेयक ला ही नहीं सकते थे, आप मुख्यमंत्री को अधिकार दे ही नहीं सकते हैं। सर हाईकोर्ट ने मान लिया था ना? लेकिन किसी ने, हाईकोर्ट ने मान लिया था। आपको बता रहा हूँ ना मैं, अगर मान लिया होता तो कर लेते कि नहीं कर लेते। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि वो नियमों के अनुसार नहीं हो सकता, लेकिन उसी नियमों के अनुसार तो नए स्पीकर का चयन हुआ। नया स्पीकर का जब चयन हुआ तो जिस ढंग से लेटर लिखा जाता है, जिस ढंग से राज्यपाल को लिखा जाता है और राज्यपाल से अनुरोध किया जाता है कि हमें ये करने की अनुमति दी जाए, वो विधिवत एक कर्तव्य के नाते जिस ढंग से वो एक प्रोटोकॉल होता है उसके नाते था और उसके नाते हो गया। नहीं सर, संबंध तो बिगड़ चुके थे ना। अभी देखिए, जब नई सरकार बन रही थी तब आपको किसी निर्दलीय विधायक ने आकर आपके पास चिट्ठी दी, बच्चू कडू और वो सारे जो विधायक थे उन्होंने, कि हमारा अब उद्धव ठाकरे सरकार से मन उब चुका है। आपने तुरंत उद्धव ठाकरे को कहा कि आप अपना विश्वास मत हासिल करिए, उसके लिए आपने विधानसभा का अधिवेशन बुला लिया। सवाल ये उठ रहा है कि क्या राज्यपाल को मुख्यमंत्री से बात किए बिना, और असेंबली का सेशन तो होने वाला था महाराष्ट्र में, आपको पता है कि जो विंटर अपना रेनी सीजन का सेशन होता है वो आता है आज की समय में। राज्यपाल को बात करना है जी। अगर मुख्यमंत्री के पास विश्वास मत के लायक पत्र होते, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आकर के नहीं मिल सकते थे? नहीं कह सकते थे कि भाई मेरा बहुमत है, आप कृपा करके ऐसा मत करिए, कुछ मत करिए? तो जब वही मुद्दई सुस्त और गवाह सुस्त क्यों बन रहे हैं आप ज्यादा सुस्त? जब मुद्दई सुस्त है वो कुछ बोलता नहीं है, इसके माने जब दूसरा पक्ष कुछ बोल ही नहीं रहा है तो मेरे पास आ रहा है, वो हमने काम कर दिया। तो जो महाराष्ट्र में हुआ वो सही हुआ, आपका मानना है? नहीं, देखिए हमने जो कुछ काम किया है उसको पूर्ण दृष्टि से सही समझते हुए किया है, और कालांतर में आप कहेंगे कि हाँ ये सही था। लेकिन फिर भी सवाल तो ये उठता रहेगा ना कि जब तक शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार थी तब तक आपका रवैया कुछ और था। खास करके जैसे विधान परिषद में 12 विधायकों का चयन करना है, आपने उस फाइल पर आखिर तक सिग्नेचर नहीं किए, कारण नहीं आपने बताया कि किस वजह से हम नहीं कर रहे हैं। मैंने उनके डेलीगेशन आते रहे जी, ठीक है जी, उनके डेलीगेशन आए, मैंने उनसे कहा जी आप पहले इस पत्र को देखो, 5 पेज का पत्र है, बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, मैं बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहता। 5 पेज के पत्र में आप राज्यपाल को धमकी दे रहे हैं और बता रहे हैं ये कानून, ये कानून, और अंत में लिख रहे हैं कि इसको विदिन 15 डेज और द अर्लिएस्ट। ये कहाँ लिखा है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल को ये लिखेगा कि साहब मुझे इतने पीरियड के अंदर करो? कहाँ पर लिखा है संविधान में? कहाँ पर लिखा किसी विधान में? कहाँ पर लिखा विधानसभा के किसी उसमें? आप पत्र किसी दिन देखोगे, बाद में खुलेगा तब आपको पता लगेगा व्हाट इज द रियलिटी बिहाइंड इट। वो पत्र करनी होगा तो 4 तो मैं उसी दिन करने वाला था, नेक्स्ट डे। आप ऐसी भद्दी पत्र लिखते हो, निष्ठी लेटर, nobody would like to see even to go through that book, that letter। लेकिन आपके संबंध अगर अच्छे होते तो शायद इस तरीके मेरे संबंध तो बहुत अच्छे थे, पर उनके सलाहकार कौन थे? उनके यही विधायक सभा के मुझसे कहते थे आप बचाइए साहब, बचाइए हमको,
ये तो उद्धव जी तो सगुनी मामा के चक्कर में फंस गए, पता नहीं कौन था सगुनी मामा उनका। तो आप ये शिवसेना, आपका कहना है कि एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक है वो आपके पास आके एकनाथ शिंदे के साथ थे, तो आपको आके कहते थे कि उद्धव ठाकरे गलत कर रहे हैं? मुझे जो है हाँ। तो खुद ही लोग बोलते थे, तो आप समझे कि उद्धव जी का थोड़ा विवेक से काम करते। उनके खुद के विधायक आके आपको बोलते थे, आपका कहना है? बोलते थे ना, उद्धव तो संत आदमी है, उसे कहाँ राजनीति में बेचारा फंस गया। आप जानते हैं कि क्या किस ढंग से फंस गए? चिट्ठी लिख रहे 5 पेज की, इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको, और अंत में लिख रहे कि विदिन 15 days और दे आर लेस। अगर आदमी सज्जन नहीं होता, सीधा नहीं होता, राजनेता होता, शरद पवार की जैसे ट्रिक जानता होता, अनुभव होता है, ऐसा लिखता क्या? मेरी मजबूरी होती है, करो मैं 4 लाइन। खुद शरद पवार ने प्रधानमंत्री से आपकी शिकायत की है कि आपका रवैया एज अ राज्यपाल शरद पवार विरोध में है, वो मेरी शिकायत क्या करेंगे? वो हो सकता है कुछ और भी करें, उनका करना क्या होता है? उनकी शिकायत तो वहाँ हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया उसको पढ़ा ना, लवासा के बारे में। ठीक है, हमारी शिकायत से क्या करना है? नई सरकार आने के बाद भी आप कंट्रोवर्सी से आपका पल्ला नहीं छूट पाया, क्योंकि वो सबसे कहते हैं ना कि एक काला पीरियड होगा आपके पॉलिटिकल करियर में। छत्रपति शिवाजी महाराज, यहाँ पर उनकी तस्वीर आज यहाँ पर ये रखा हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर आपके बयान हमेशा कंट्रोवर्सी में रहे, और विपक्ष ने तो वो मुद्दा उठा ही लिया। वो बयानों में मैं जाना नहीं चाहता, आपने उस पर जब राज्यपाल थे तब भी आपने उस पर क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है। लेकिन एक के बाद एक आपकी जो स्पीच थे, जैसे मुंबई में आपने एक स्पीच दिया था और कहा था कि मुंबई से अगर गुजराती और राजस्थानी समाज के लोग चले जाएंगे तो मुंबई का ये खत्म हो जाएगा, उस पर भी आपने भूमिका रखी थी। सवाल मेरा ये है कि उसके बाद तब वक्त ऐसा आया कि एक वक्त था जब भारतीय जनता पार्टी भगत सिंह कोश्यारी के पीछे खड़ी रहती थी। अगर भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना लामबंद हो रही है तो बीजेपी आपके साथ में खड़ी होती थी। ये वाली कंट्रोवर्सीज में एक के बाद एक बीजेपी के नेताओं का बयान आना शुरू हो गया। आशीष शेलार, मुंबई का बीजेपी के अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि आपके बयानों से वो इत्तेफाक नहीं रखते। उदयनराजे भोसले, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, उन्होंने कहा कि राज्यपाल को यहां से निकाल देना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने कहा कि जो उदयनराजे भोसले उनके मन में जो बात है उनसे हम इत्तेफाक रखते हैं और वो बात हमने दिल्ली पहुंचाई है करके। ऐसा लग रहा था कि अब आपका इस्तेमाल खत्म हो गया, अब बीजेपी आपके वजह से बीजेपी तकलीफ में आ रही है, तो बीजेपी के नेता आपके खिलाफ उन्होंने बात करना शुरू कर दिया। देखिए जी, पहली बात तो यह है कि आपने मेरे एक एक बयान को मैंने सारे महाराष्ट्र के बुजुर्गों से पूछा, देश भर के मेरे IAS IPS आते पढ़े हुए, मैंने पूछा। जैसे मैंने बचपन में पढ़ा था कि समर्थ रामदास उनके गुरु थे, आपने भी पढ़ा, सबने कहा, हमने नहीं पढ़ा। लेकिन जो पहले दिन बयान आया तो मैंने अगले दिन बयान दे दिया कि हमारे केवल महाराष्ट्र के नहीं, हमारे राष्ट्र के हमारे जो है प्रेरणा स्रोत है ना। और यदि किसी का कोई कहता है कि ये सही नहीं है तो मैंने कहा मेरा ज्ञान वर्धन करा दे, क्या दिक्कत है? कोई मैं परफेक्ट हूँ क्या? मैंने बचपन में वही पढ़ा, सारे लोगों ने वही पढ़ा। अब मान लिया महाराष्ट्र में जाकर के कोई मेरे बयान देने का मुझे पहले बता देते कि साहब वो गुरु नहीं तो बता देता। अब वो क्या कुछ लोग नहीं मानते हैं, वो नहीं मानते, वेल एंड गुड। मैंने कौन पर उनको थोपा तो नहीं अपनी बात को, मैंने कहा आपने मेरा ज्ञान बढ़ा दिया है, धन्यवाद है। तो इसलिए इस पर तो अपोजिशन है, तो एक दान तो अपोजिशन है, उनसे कुछ बोलना ही बोलना है, ठीक है? और जहां तक आपने कहा कि उसको गुजराती, और मैंने पहले अपोलोजाइज किया तुरंत ही, दैट वाज द ओनली माय स्टेटमेंट जो अतिरेक में हो गया। उसी समय मैंने कहा कि नहीं, ये नहीं है, क्योंकि मैं उसका अगला पार्ट मुझे और बोलना था, मुझे बोल नहीं पाया मैं जल्दी में, इसलिए इमीडिएटली अपोलोजाइज। लेकिन एक दूसरी बात, और जहां तक जो है कि भाई पुराने नेता, ये फलाना नेता, मैंने उसमें महात्मा गांधी जी का नाम लिया, मैंने उसमें नेहरू जी का नाम लिया, लोग उनको आइकन मानते थे। मैंने उसमें नेताजी का लोग आइकन मानते थे, मैंने शिवाजी का नाम लिया, आइकन मानते थे। अगर आप ये कहते कि पुराने, तो भी आपके नए भी अम्बेडकर से लेकर के ये जो बैठे हैं इन तक जो है नहीं आप इनको ले सकते हैं। अब मैं ये कहूँ कि तुम हमेशा ही विजय हजारे और उसको मानते रहो, लाला अमरनाथ को, तो वो तो कहेंगे आज भी है कि नहीं कोई तुम्हारे पास, या खाली राम जी का गुण गाओगे? खाली उनका गुण तो गाना ही गाना है, शिवाजी का गुण तो गाना ही गाना है, राणा प्रताप का गुण तो गाना ही गाना है, और व्हाट इज दैट प्रेजेंट? उन्हें तुम्हारे नमूना आज
बात सुनो पहले पूरी। जी। तो एक जो है प्रेजेंट के हिसाब से हम लोगों को सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए नई पीढ़ी को। सर आपकी बात सही है, तो फिर देन नहीं आपका कॉन्टेक्स्ट सही होगा, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा सवाल यह है कि विपक्ष ने उस मुद्दे को उठाया, वहां तक ठीक है, आपकी पार्टी के खुद के नेताओं ने जो अब तक आपको सपोर्ट कर रहे थे, फिर देखो वो खुद उन्होंने बोलना शुरू किया कि आपको वहां से निकालना। मैं राज्यपाल के रूप में आने से पहले बीजेपी से इस्तीफा दे चुका हूं और आज यहाँ आया हूँ। आज भी मैंने कोई बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रखी है, ठीक है, तो इसलिए आपकी पार्टी क्यों कहते हैं? चलिए ठीक है, बीजेपी के नेताओं ने आपको सपोर्ट नहीं किया, मैं अलग तरीके से आप पूछ लेता। चंद्रकांत दादा पाटिल का बयान पढ़ लिया होगा, बावनकुले का बयान पढ़ लिया होगा, अपने देवेंद्र फडणवीस ने 10 बार कहा है, आपके टीवी पर भी कहा है, सब पर कहा है। नहीं, हम तो उदयन राजे भोसले का बयान भी देख रहे हैं। आखिर हर एक पार्टी में अगर एक आध आदमी अपने इससे बोलता है तो क्या आप ये सोचते हैं कि सब ऑथराइज सब एक ही बट आपको नहीं लगता कि उसके वजह से उनको लग रहा था कि अब हमारे लिए, क्योंकि भाजपा के साथ भगत सिंह कोश्यारी का नाम जुड़ चुका है, अब ऐसे में आपकी वजह से उनको दिक्कत आना शुरू हो जाएगा, इसके लिए बेटर है कि आप यहां से जाइए। मेरी बात सुनो जी, न तो कोई मुझे वहां से भेज रहा था, न मुझे किसी ने वहां से भेजना था, ठीक है नहीं। और मैंने, अगर आप जब प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने आए थे जी हमारे राजभवन का, तब भी कहा था कि मैं इच्छुक नहीं था। ये आपका स्नेह और प्रेम और विश्वास था कि इसके लिए मैं महाराष्ट्र आया हूँ। तो इसलिए महाराष्ट्र जाने न जाने वो तो बात ही अलग है। और एक दो उन्हें कोई बयान दिया, ठीक है, उनका व्यक्तिगत मत है, और कोई भाजपा मेरा समर्थन कर रहा है, मैं ये मानता भी नहीं हूँ कि कोई किसी के समर्थन के लिए थोड़ी मैं अपना काम करता हूँ। कहीं पर मेरी गलती होती है तो किसी के नुकसान के लिए थोड़ी करता हूँ। नहीं, ठीक है ना, आपने जानबूझकर नहीं किया होगा, लेकिन बीजेपी ने ऐसा सोचना शुरू किया कि आपके बयान उनको एम्बैरस कर रहे हैं। ये आप उनसे, वो एम्बैरसमेंट से बचने के लिए उन्होंने आपके खिलाफ मोर्चा निकाला। जी, ये बीजेपी के लोगों से पूछो, मेरे से मत पूछो। अभी आपका बीजेपी से कोई संबंध नहीं है? नहीं, बीजेपी माने बीजेपी, ये वहां के लोगों को आपको लगता था, उनसे पूछो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे तो कोई लगता ही नहीं। ठीक है, मेरा बयान सही था जी, मैं ये मानता हूं कि मेरे बयान में कहीं कोई कमी नहीं थी। सर 3 साल आपने महाराष्ट्र में बिताए, एज अ गवर्नर आपने बिताए। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आप जब आए तब लग नहीं रहा था कि राजनीतिक स्थिति कुछ खास बदलेगी, क्योंकि चुनाव में बीजेपी शिवसेना जीतेगी ये तो दिख रहा था, सारे एग्जिट पोल बता रहे थे, सारे ओपिनियन पोल बता रहे थे, और उसी तरीके से हुआ, लेकिन पॉलिटिकल सिचुएशन बदल गई। मुझे सवाल ये पूछना है कि क्या ये जरूरी है कि हर जगह पे जहां पर बीजेपी का शासन नहीं है, जिस राज्य में, वहां पर राज्यपाल और वहां की राज्य सरकार का संघर्षमय पूरा कालखंड रहे? आपने भी उस संघर्ष को फेस किया, आपने अकेले पर वो फेस किया, क्योंकि आप उस चेयर में बैठे हुए थे राजभवन में, जो भी आरोप लग रहे थे उससे आप ये नहीं कह सकते कि भाई मेरा उससे लेना देना नहीं, क्योंकि आप उस चेयर में बैठे हुए थे। ये माहौल कहां से पैदा हुआ है? क्या जो कांग्रेस के समय में हुआ करता था, क्या वो इस समय में भी होना चाहिए? जगदीप धनखड़ अगर वहां पर राज्यपाल है तो उनका ममता बनर्जी के साथ संघर्ष होना ही चाहिए। आप यहां पर राज्यपाल है और आपके बीजेपी के खिलाफ सरकार है, तो वहां पर संघर्ष होना चाहिए। कहां क्या हो रहा है, क्यों ऐसा संघर्ष होता है? अगर आप इस संघर्ष के बजाय आप ये कहते कि देखो भगत सिंह, तुम पहले ऐसे राज्यपाल हो, आज तक शायद शिवनेरी सब लोग हेलीकॉप्टर से तो गए होंगे, मुझे नहीं लगता कि पूर्व मुख्यमंत्री और आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, चलो वो भी उसमें उम्र कम थी, वो पैदल गए हैं। और भगत सिंह कोश्यारी 79 की ईयर में, 78 की ईयर में शिवनेरी पैदल जा रहा है, सिंहदुर्ग पैदल जा रहा है, प्रतापगढ़ पैदल जा रहा है, रायगढ़ पैदल जा रहा है, तो किस लिए गया होगा? कि कुछ छत्रपति शिवाजी पर श्रद्धा होगी तभी तो गया होगा ना, उनके बारे में जानता होगा तभी तो गया होगा ना। है, कोरोना काल में भी भगत सिंह कोश्यारी सन 62 के बाद सिनेमा हॉल में जाता है और तानाजी पिक्चर को देखता है, कोई श्रद्धा होगी तभी तो गया होगा ना। मैं पूछो, आप पूछ लीजिए पिछले 50 साल में कितने लोग हैं जो जीजाबाई के उसमें गए हो, मातृभूमि में गए हो जहाँ उनका जन्म हुआ है, वो कितने लोग गए हैं? वो भी बाय रोड, नॉट बाय हेलीकॉप्टर। वो तो मैंने कहा ही ना सर, 1 मिनट कि राजभवन में जितने प्रोग्राम नहीं, पर पिछले 3 साल में हुए हैं, आप लोग केवल कंट्रोवर्सी की बात बोलते हो। सर क्यों नहीं बोलते? 1 मिनट, आप इतने आज तक का इतना बड़ा सम्मान, इतना आपका चैनल है जी, माने आप ये आपने कहीं भी नहीं कहा
कि आपने ये कह गए, आप ये गए, ये गए, ये तो आपने कहीं बोला ही नहीं। नहीं, मैंने कहा ना कि तो आप उस आज तक जितने राज्यपाल हमने देखे हैं, राजभवन में इतने सारे प्रोग्राम, पब्लिक फंक्शंस, लोगों का मिलना जुलना, ओपन जिसे कहते हैं कि कोई भी आके आपसे मिल सकता है, ये बहुत कम बार हमने देखा हुआ है। लेकिन आमतौर पर राजभवन ये एक सिक्लूडेड जगह हुआ करती थी जहां पर राज्यपाल बैठते हैं और बड़ा ही प्रोटोकॉल के तहत सारी काम चलता है। लेकिन चूंकि एक अलग स्थिति महाराष्ट्र में पैदा हुई, उसकी वजह से आप हमेशा चर्चा में रहे, ये बात भी तो हमेशा देखनी पड़ेगी। मैंने कहा आपको ना जी कि, और मेरा सवाल उस पर यह है कि राज्यपाल और राज्य सरकार का संघर्ष, क्या ये एक नॉर्म बन चुका है कि जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है उस राज्यों में राज्यपाल और राज्य सरकार का संघर्ष बना रहेगा? तमिलनाडु में हम देख रहे हैं, महाराष्ट्र में हमने देखा, बंगाल में हम देख रहे हैं, झारखंड में अब जहां से बैस आए हुए हैं वहां पर भी वो संघर्ष देखा गया। अब ये तो आपके अध्ययन का विषय है और मुझे लगता है आप उस संघर्ष से गुजरे हैं, इसके लिए आपको पूछ रहा हूं। जो राजनेता हैं, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, फिलोसोफर्स हैं, राजनीतिक विचारों के बड़े कॉलोनिस्ट हैं, ये उनसे चर्चा करिए और उनके माध्यम से अगर आप इस संघर्ष न हो आगे, इस प्रकार की कोई अच्छी चीज चाहते हैं, कोई अच्छी चीज आप निकाल सकते हैं, तो मैं आज तक क्या कल तक भी आपका सम्मान करूंगा और जन्म भर तक सम्मान करूंगा। तो ये मेरे ऊपर क्यों छोड़ो? अब कोई खुद ही सुनिए, जब कोई खुद ही मैंने बोल दिया, आपको पता है जब ये अघाड़ी ने कहा कि हमारा बहुमत हो गया है, तो मैंने कहा ठीक है, जरा पत्र लाओ। बेचारा, उसको मैं इतना प्यार करता हूँ, आदित्य को आज भी प्यार करता हूँ अपने बच्चे जैसा, ठीक है नहीं? वो बेचारा करता रहा फोन, दिल्ली से कोई आया ही नहीं उसमें। मैंने कहा यू कीप राइटिंग टू मी कि ऊपर से कुछ आपके पास आ गया, आप ऐसे बोले जा रहे। बेचारे निराश होकर बाहर जाना पड़ा। कितना बुरा लगा मुझे, मेरा बच्चा जैसा है, अच्छा लगा होगा क्या? और जब उन्होंने तय कर लिया कि हम करते हैं, मैंने कहा ओके आइए। और मैंने कहा जो तुम्हारा दूल्हा कहाँ है जिसको तुम मुख्यमंत्री बनाते हो? आपने कभी जाना क्या इस विषय को कि दूल्हा आ ही नहीं रहा और शादी हो रही है? क्या आज भी आपको बुरा लग रहा है? मेरी बात, उद्धव ठाकरे और आदित्य के साथ जो हुआ है, पूरी बात सुनो जी। जी, आ ही नहीं रहा है, ये क्या उचित है? क्या सम्मान है? क्या ये ऐसे कोई आ ही नहीं रहा, कल को कहते कि नहीं मैं तो तैयार नहीं हूं। देन बड़े लोगों ने समझाया, यार समझ में आ गया। प्रफुल्ल पटेल से मैंने कहा ये उचित है क्या? आप तो इतने सीनियर आदमी हो। उन्होंने कहा तो गलत हो रहा है, आना चाहिए उनको यहाँ। अब हम नहीं आएंगे। अरे भाई मैंने कहा कम से कम पत्र तो लिख करके दे दो, मैं स्वीकार करता हूँ। पता है 3 घंटे लगे उसको लिखवाने में। पूछ लो शरद पवार से, भुजबल से, सबसे पूछ लो। वो तो बीजेपी से बात कर रहे थे, भैया आपको पता था उसके बारे में? आई डोंट नो दैट, मेरा ये काम नहीं है, ये मेरी बात काम, मेरी विषय मेरे से मत होगी कौन किससे क्या कर रहा था। परंतु ये कौन सा तरीका है? क्योंकि उस दिन मैं बोल नहीं सकता, आज आप इसलिए बोल रहा हूँ। अब पूछ लो सबसे। अंत में सबके कहने से शरद पवार को उनको तब जाके लिख करके रात के 11 बजे मेरे पास पहुंचाया। तो जब मैंने कहा कि वो व्यक्ति इस पद के लिए नहीं बल्कि लोगों के मार्गदर्शन के लिए था, उनको मुझसे बार बार कहते रहे कि शिव सैनिक को बैठाने के लिए मेरे बड़ा साहब का आदेश था। अब वो शिव सैनिक के को बैठाने के बजाय शिव सेनापति बैठ गया। बड़ा साहब का तो सपना खत्म हो गया। तो इसलिए क्या है कि वो चक्कर में फंस गया। मैंने फिर आपको कहा है, आज भी आपको बुरा लग रहा है जो उद्धव ठाकरे और आदित्य के साथ वो मतलब मुझे इसलिए कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बिक चुका है, इलेक्शन कमीशन पर आरोप लग रहा है। ऐसा है ना, अब वो तो बोलेंगे, देखो ये तो सामान्य रीत है। लेकिन मेरा कहना यह है, जो आपको बोल रहा हूँ कि जब आदमी फंस जाता है, ठीक है, मैंने तो जहाँ एक बार थोड़ा गलत हो गया बोल दिया कि यार सॉरी फॉर दैट, मुझे कभी ऐतराज नहीं होता है। मैं मनुष्य हूँ, 90 काम अच्छा करूंगा, हो सकता है 5 काम गलत भी हो जाए। 90 बात अच्छी बोला, 5 गलत भी हो सकती है। मुझे कोई दुख नहीं करके गलत होता है तो। पर अगर आदमी चीज ही नहीं समझे, उसका दोष दूसरे पर ही डाल देगा, तो दूसरे पर सिर पर सीखना फोड़ने से तो काम नहीं चलेगा। चलिए, अभी आप राजनीति से पूरा बाहर रहेंगे जी? अब बहुत हो चुकी है राजनीति। आप ये बताओ, राजनीति से बाहर है कि आप राजनीति के अंदर है? आप तो राजनीति, आप बताओ ना सर। हम तो बाहर से देखने वाले लोग हैं, हम तो पत्रकार हैं, हम कहाँ राजनीति। फिर वही बात है, इस देश में प्रजातंत्र में जो भी वोटर है, जो भी मतदाता है, हर मतदाता जब बटन दबाता है
तो किसी न किसी राजनीतिक दल के बटन दबाता कि नहीं दबाता है जी, ठीक है जी। तो कोई खुलेआम राजनीति करता है, कोई पार्शली राजनीति करता है और कोई मौका आने पर कि भाई ठीक है समाज के लिए ये करना चाहिए, समाज के लिए। लेकिन आप बीजेपी की राजनीति नहीं करेंगे आप? तो मैंने बोला ना आपको, इसलिए मैंने कहा कि भाई अच्छा हो कि मैं अपना बहुत सी सोशल वर्क है, मैं पहले से एजुकेशनल फील्ड में काम करता था, और भी काम करता था, तब भी जनसंघ बीजेपी का सहयोग करता था, तब भी उनका जहाँ जरूरत पड़ती थी करता था, राष्ट्रीय विचारधारा का। इसलिए तो बीजेपी भी जब मुझसे कहा जाओ तो हम बीजेपी में आ गया संघ की जिम्मेदारी छोड़ के। लेकिन अभी आप बीजेपी में नहीं है। लेकिन अभी आज अभी आप माने भाई ये सदस्य होना अलग चीज है। कुछ लोग सदस्य होकर बीजेपी के बनते हैं और कुछ लोग बिना सदस्य हुए भी बीजेपी के प्रति शायद सदस्य से भी ज्यादा काम करते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं देश के अंदर। पार्टी उन्हीं से चलती है, कोई पार्टी बीजेपी दूसरी हो, दूसरी पार्टी भी सही। जो सदस्य नहीं होते हैं और वो जो शुभचिंतक होते हैं, काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, जिनके कामों से लोग प्रभावित होते हैं, उसका असर पड़ता है। उसके कारण से राजनीति को भी लाभ होता है। किसी पार्टी को अगर अच्छे काम करते हैं तो ऐसे बहुत सारे अच्छे काम करते हैं। आपको लगता नहीं मुझको तो और अच्छे काम करने चाहिए, खाली वोट ही मांगनी चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल करने चाहिए। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि अगला आपका जो काम होगा वो राजनीति से परे। आपने जैसे कहा कि सोशल वर्क की तरह आपको काम करना है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसे सबसे तेज आपकी टैगलाइन है, तो इसी तरह से सबसे तेज हमारी सरकार की लाइफलाइन है। Thank Mr. Puri. I thank you for giving me the chance to address you. Terrorism now a global issue. The First Lady position is so unusual. Never in my career did I ever see that love and affection in any other country than we saw in India in '79. Pakistan has been responsible chronically for association with sponsorship of terrorist groups. You are launching these prestige brands, but there are lots of smaller companies which are coming out with interesting products. Particularly, I mean, if you go to Goa, there are these craft gins which are coming up. They are not huge in size, and we saw that Greater Than Gin was quite a success before Diageo bought a stake in that company. Have you considered the option of picking up some of these smaller brands, or does it make more sense for you to build rather than buy? Radico, like personally, and Radico, like we've always believed in innovation. And even if you see our history, when we launched our first brand in 1998, we are the only company which has organically created all the brands. Today we have 5 millionaire brands, and in the coming year, hopefully, we are going to add 2 more millionaire brands. So we'll have total 7 million cases brands in our portfolio. So we believe in organic creation rather than buy. So for us, our passion is to create brands with a unique standing in the market and a very different character. So we would not be looking at acquiring brands. In fact, we will be looking at creating newer segments and newer brands. The one question which keeps coming up is for Radico, for investors of yours, and they have done quite well with your stock over the last many years, is that as you do this expansion, and you are clearly on a significant expansion mode, could the balance sheet get stretched once again? Because in the last few years, you've actually cut down your debt, which was a problem area, but now no longer is. But as you keep on adding capacity and launching new brands, are your current cash flows enough to drive that expansion, or would you need to load up that balance sheet once again? If you see, in 2016, we had a peak debt of 960 crores. And last year, our debt was about 160, and in fact, our working capital also we pumped in about close to 400 crores from internal accruals. So we are totally deleveraged, and going forward, we have doubled our capacity because the demand is so high. So we have increased the capacity in Rampur. We have put a greenfield plant in Sitapur, which would be one of the largest plants in Asia, and
Going forward, I don't think so debt would be an issue, because in the next 3 to 4 years, we'll be again debt free, because the kind of cash flows the company will throw and the kind of things we are seeing in the future. So debt we don't see as an issue at all. Cutting edge, provocative, fun, and most importantly, disruptive. That's Raghava KK for you. He's one of the most fascinating creators and thinkers in the Indian art space today, whose evolution is for all to see. From paintings, installations, film, iPad art, and now his latest work with tech and artificial intelligence has shaken up the Indian art space. Art marrying technology is at the forefront of most art summits and fairs around the world and is marking the evolution of art into digital and artificial intelligence, and not to forget NFTs. Whenever artists meet for dinner, they talk money. And whenever bankers meet, whenever bankers meet, they talk art. That when NFTs became... Sorry. Welcome to the show. Welcome. Oh, you're most welcome. Just in love. That's beautiful. And I realized love is deep. Can we do this again? Wow, Yeah. I love this. Welcome people. This is a group chat. Today, thank you for bringing me back. I have a monkey brain. And I was just wondering, how is it humanly possible to even create that? Then I realized it's not humanly possible. Exactly. We dance between them. Yeah. We create magic. Thank you, Nay. Thank you, Maya. Can we do this again? See, this is magic. Okay, so let's do it again. So Raghava KK, the name needs no introduction. We're going to cut straight to the chase. My God, how did he create such amazing stuff? I was blown when I saw it inside. You want to know the secret? Yes. I didn't create it. I believed in it. And so many people came together to make it happen. The artist of today. But the actual art is always you. It is, but it's in conversation with reality, with all the binaries, beauty, mind, body, everything comes together. I ask a very simple question. Are we the Homo sapien, the monkey with the tool? Or did the tool create us? Did we create the tool or did the tool create us? We created the tool, but now the tool is creating us, right? Exactly. And I'm scared. This will replace me. I'm not an image maker anymore. Why would it replace you? It can't, because the spirit. It cannot. Exactly my point. That's the artist. See? Exactly my point. And so it's never let's make the spirit shine. You know that box that you created inside, and I was sitting over there and I was just wondering, how is it humanly possible to even create that? Then I realized it's not humanly possible. Exactly. Then I realized it's not humanly possible. But even that is a creation of humanity again. I wanted to surprise myself. I wanted to fall in love again. And did you fall in love with yourself again? I'm in love. There's no object of love. And you are one of the very few artists who really supports NFTs for what it is. Do you think this is here to stay, the trend, or it's very short-lived? The truest gift humanity has is our ability to believe. That's when you have more speculation than belief, that means you don't know why you're collecting NFT.
All right, much of the showdown there that's happening in Maharashtra as Uddhav Thackeray has now reached Sena Bhavan. In fact, the fight is still on despite the Election Commission granting the bow and arrow symbol to Shinde Sena. Uddhav Thackeray and camp now reaching the Supreme Court. They are holding a key meeting. Let's take a listen as reactions within the Sena coming in. ठीक आहे, सरकार त्यांचं आहे, आज त्यांचं आहे, उद्या असेल याची खात्री नाही, कारण सत्तेवर कोणी राहायचं ही जनता ठरवते. जनता मस्तवालपणा जो आहे त्या मस्तवालपणाच्या गंडस्थळावरती हल्ला करण्याची ताकद शिवसेनेच्या नेतृत्वात आहे आणि महाराष्ट्राच्या जनतेमध्ये आहे. हा त्यांचा आनंद आउटघटकेचा आहे. कुठेही उल्लेख नसल्याचा आता भाजप म्हणते. 2000 कोटींचा आरोप सुप्रीम कोर्टाच्या कुठेही उल्लेख नसल्याचं म्हटलं आजच्या एका पिटिशनमध्ये. ते सुप्रीम कोर्टामध्ये कशा करता सांगायला हवं, आम्ही सांगतोय ना. काय काही लोकांना आपल्या मूर्खपणाचा आत्मविश्वास, तसा मूर्खपणाचा आत्मविश्वास, आम्ही काय सांगतोय त्यांना कळत नाही. आम्ही काळजी भूमिका मांडली. 2000 कोटी आतापर्यंत खर्च झाले या व्यवहारात. 2000 करोड़ का लेन देन हुआ है. नाव आणि धनुष्यबाण, शिवसेना नाम और धनुष बाण हे कसे आले, कुठून आले, कसे खर्च केले, कोणाला दिले, कालपर्यंत हा व्यवहार चालू होता. कालपर्यंत कल तक ये लेन देन माझ्या भूमिकेवर ठाम. मला आताच लेकिन हम हमारी भूमिका पर गुन्हे दाखल झालेले आहेत. अभी भी कायम है. आतापर्यंत 32 ठिकाणी गुन्हे दाखल झाले. 1 लाख गुन्हे दाखल झाले माझ्यावर. 1 लाख FIR दर्ज हुई. तरी संजय राऊत डरने वाला नहीं. शिवसेनेबरोबर मैं पीछे नहीं हटूंगा. मैं शिवसेना के साथ विधान भवन और शिवालय की जगह सरकारी जगह थी. सरकार उनकी है और सत्ता की दुरुपयोग करके ये सब चल रहा है, लेकिन ये कुछ दिनों के मेहमान हैं. Thank you, sir. Thank you, sir. All right, there you have it. You have Uddhav Thackeray camp coming out, making comments right after they filed a plea in the Supreme Court asking for a stay on the Election Commission's order granting the bow and arrow symbol, the original Shiv Sena's symbol, to the Shinde Sena. Currently, Eknath Shinde, who is the Chief Minister of Maharashtra, his camp, the Shinde Sena at this point, is granted the bow and arrow symbol by the Election Commission, which Uddhav Thackeray calls unconstitutional, saying several constitutional provisions were overlooked by the Election Commission and therefore they now knocked on the doors of the Supreme Court yet again, citing the number of MLAs who were asked to be disqualified at that point. That plea, in fact, trying to link this issue with the Election Commission not granting them the bow and arrow symbol with the petition that they had filed earlier on claiming to disqualify at least 15 MLAs who supported the Shinde Sena at that point. And they've also asked for an urgent hearing. So far, Chief Justice of India has not responded. But at this point, we see that the Uddhav Thackeray camp coming together in a key huddle, trying to discuss developments coming in post the Election Commission's order. In fact, there are ways this issue could pan out. The Sena's fight in the top court, of course, will be very closely watched. As we see that Uddhav Thackeray has lost the government and MPs, MLAs. He's really lost a large chunk of his support. Will he lose the Sena's bow and arrow symbol as well? At this point, Election Commission has already granted it to the Shinde Sena. He still hopes that the fight, or rather, he hopes that the Supreme Court might just overturn that ruling and grant them the bow and arrow symbol. But this comes ahead of the very important MCD elections. This is quite a bruising war there for Bal Thackre's legacy, as Bal Thackeray, father of Uddhav Thackeray, had founded the Shiv Sena back in 1966.
and it appears that his son wasn't able to keep it. In fact, a fraction of the same Sena, led by Eknath Shinde, has managed to really grab the large chunk of support within the MLAs and the MPs. In fact, this is certainly a Mahayudh there for who's going to be the real Senapati. Ritwik Balekar joining us right on the phone line to give us a little more on this. Ritwik, a quick word as we see a key huddle there by Uddhav Thackeray and camp. We saw reactions coming in, calling this move by the Election Commission as unconstitutional and that it's driven by the BJP. A lot of allegations against the BJP High Command that Uddhav Thackeray and camp are making. Tell us a little more. What really are they seeking to conclude with this key meeting that's happening right now? We've lost Ritwik's line there, but I'm going to cut across to Eknath Shinde's camp now, holding a press conference in response to all the allegations. Let's have a listen. ताब्यात घेणार का? ताब्यात घ्यायला नाही. ताब्यात घ्यायचं झाला का त्या पैशाचा लोभ आहे त्यांनी त्या गोष्टी करा, त्याच्याशी आमचं काही घेणे देणे नाही. एकीकडे शिवसैनिकाला जो पाळीव कुत्रा जो संबोधतोय त्या लोकांचं ते काम आहे, आमचं ते काम नाही. आम्हाला शिवसेना प्रमुखांचे विचार पुढे घेऊन जायचा आणि शिवसेना प्रमुखांची शिवसेना वाढवायचा हाच आमचा अजेंडा राहणार आहे. ज्या काही शिवसेनेच्या शाखा आहेत या शाखांचं काय, शिवसेना शाखा आहेत राज्यभरामध्ये, या शाखांवर दावा करताय की त्या ठाकरे गटाकडे बघा शाखा या विकत घेतल्या गेल्या होत्या बऱ्याच शाखा किंवा पक्षामार्फत विकत घेतल्या गेल्या होत्या किंवा पक्षामार्फत त्या शाखांवरती पक्षामार्फत अशा कोणत्याही शाखा विकत घेतलेल्या नाहीये. मला त्याची चांगली कल्पना आहे. जे काही ट्रस्टच्या माध्यमात असेल तर तो त्यांची प्रॉपर्टी आहे, ट्रस्टची प्रॉपर्टी असू शकते. एखाद्या वेळेला मी ज्या ठिकाणी मी आमदार आहे, माझं कार्यालय आहे, हे कार्यालय मी स्थापन केलेलं आहे, त्याला शिवसेना नाव होतं आणि आजही ते शिवसेनाच नाव राहणार आहे. म्हणून असा शाखेचं काही असे आदला बदल असे काही मोठ्या प्रमाणात होणार नाही आणि शिवसैनिकांमध्ये कधी यासाठी भांडणं होणार नाही. सर, हिंदी में जानना चाहेंगे, आज जहाँ पर देख रहे हैं कि विधान भवन में शिवसेना के ऑफिस जो की सील की गई थी उसको लेकर भी आज संजय राऊतने जे 2000 कोटीचे आरोप लावलेले आहेत, मी पहिल्यांदाही सांगितलं की त्या संजय राऊतच्या डोक्यावर आणि म्हणून अशा सायको माणसाच्या प्रत्येक प्रश्नाला उत्तर देणं हे आम्हाला उचित वाटत नाही. परंतु एक निश्चितच त्यांना आणखी कल्पना नाही की निवडणूक आयोगाने अधिकृत शिवसेना पक्षाची मान्यता आम्हाला दिलेली आहे. म्हणून इलेक्शन कमिशन हॅज गिवन आज द नेम सिंबल ऑफ द पार्टी डिस्क्वालिफिकेशन कसं होईल याची निश्चित कारवाई आम्ही करणार आहोत. डिस्क्वालिफिकेशन झाली पाहिजे. दुसरी गोष्ट, त्यांनी जी काही मुख्यमंत्री साहेबाबद्दल त्यांच्या विरोधात आता गुन्हे नोंद व्हायला सुरुवात झालेली आहे. ही त्यांनी जी काही त्या भाषेला आम्ही त्या भाषेचं दिलं असतं, परंतु प्रमुखांनी आम्हाला ती शिकवण दिलेली नाही. म्हणून हत्ती चले बाजार कुत्ते भोके हजार अशी ती अवस्था आहे. म्हणून त्याच्यावर आम्ही जास्त काही भाष्य करणार नाही. त्या चिखलामध्ये चोरांच्या टोळीने आज कार्यालयावरती दावा ठोकलेला आहे आणि फारकाळ चालणार आहे. त्याला आता याचं उत्तर आता थोडा 1-8 दिवस थांबा, त्याचं उत्तर त्याला दिलं जाईल. कुत्रा पिसळत तर कुत्र्याला चावत असतात का? त्याला आपण कोणतं तरी औषध देऊन त्याला शांत करू ना. थांबा थोडं. सर, हिंदी में जानना चाहेंगे, इलेक्शन कमीशन की ओर से मिलने के बाद अब जो है विधान भवन में पहुंचे हैं और शिवसेना ऑफिस जो कई दिनों से बंद था उसको सील कर दिया गया था, उसको लेकर अब क्लेम किया गया. एक बात देखिए कि इलेक्शन कमिश्नर जो आदेश दिया है, शिवसेना का अधिकृत मान्यता हमको मिली है और ये विधान भवन है. ये विधान भवन में काम करते वक्त पक्ष कार्यालय जो भी होता है हर पार्टी को कार्यालय दिया है. भाजपा का कार्यालय, हमारा कार्यालय, हर पार्टी का कार्यालय है. हमने वही शिवसेना का कार्यालय जो है उसी में जाके हमारा कामकाज शुरू किए. आज जैसे प्रताप सरनाइक ने जो बताया, ये व्हीप भी हम जो निकाल रहे हैं ये 56 विधायकों को दिया है. 56 विधायक सभी हमारे पूरे विधायक जो व्हीप नहीं मानेंगे उनका क्या भगवान जाने क्या होगा, लेकिन व्हीप देना ये पार्टी की तरफ से हमारी जिम्मेदारी बनती है. इसलिए हमारे मुख्य प्रतोद ये जो अर्थसंकल्पीय अधिवेशन रहेगा उसका व्हीप सबको बजाएंगे और उनका व्हीप मानना ये उनकी नैतिक जवाबदारी रहेगी. नहीं तो उनके ऊपर भी डिस्क्वालीफाई की कार्रवाई हो सकती है.
क्या विधान भवन के साथ साथ जो सेना भवन है और दूसरे जो शाखा है जो कि उद्धव ठाकरे कैंप के देखो, हमने बार बार ये चीजों को स्पष्ट किया है। सेना भवन ये हमारे लिए मंदिर है, शिवसेना प्रमुख ने बनाया हुआ मंदिर, जहां हमारे बहुत सारी मीटिंगें हुआ करती थी। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि वो प्रॉपर्टी है, तो हम जाके उनकी प्रॉपर्टी पे हाथ नहीं डालेंगे। लेकिन उस रास्ते से जब गुजरेंगे तो निश्चित हम वहाँ नमन करेंगे। ये हमारे लिए वो मंदिर है, हम उनको नमन करेंगे और भगवान से भी बोलेंगे कि ये शिवसेना बहुत अच्छा रहे और अच्छा रहे, इसमें कोई बाधा ना है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक नेशनल कमेटी मीटिंग भी होने वाली है, जिसमें मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक नेशनल कमेटी मीटिंग भी होने वाली है। बताया जा रहा है कि उसमें अब ऑफिशियल तौर पर कहीं एकनाथ शिंदे को ही शिवसेना का चीफ माना जाएगा। ये सब पार्टी डिसाइड करेंगे। पार्टी की जो वरिष्ठ हमारे सब नेता है, वो नेता की बैठक होगी, वो बैठक में उसका निर्णय कोई शाखा का झगड़ा नहीं है। ये झगड़ा क्यों लगा रहे हो बार बार? कोई शाखा का हमारा झगड़ा नहीं है, वो सब हमारे शिव सैनिक है। क्यों हमारा एक में कसर फोड़वाने की तैयारी कर रहे हो? हम एक में कसर फोड़ेंगे नहीं, उनको भी समझाएंगे और हम भी समझ लेंगे। कोई हम आपस में झगड़ा करना नहीं है, हम बाला साहब की शिव सैनिक है। लगातार उद्धव ठाकरे और संजय राउत की ओर से ये बताया जा रहा है कि उन्होंने धनुष्य बाण और शिवसेना की चोरी की है, एक चोर तरीके से। संजय राउत पागल आदमी है, उसके कहा उसके बार बार उसका ये करते रहते। सर, संजय राउत ने ये भी कहा है कि अमित शाह जी ने महाराष्ट्र मराठी। संजय राउत पागल आदमी है, उसके बारे में बार बार मत पूछो। कुत्ता अगर पागल होता है तो कुत्तों को थोड़ी अपन काटते हैं, लेकिन ऐसा मत सोचो ना। उद्धव ठाकरे ने भी यही स्टेटमेंट दिया है कि चोरी की गई है नाम की, और साथ ही अरे भैया, पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट दर्ज करा है, उसकी पूरी ये हो जाएगी, चौकसी हो जाएगी, और क्या कर सकते हैं। साहब, कल उन्होंने मोगेम्बो खुशवा ये कहा है अमित शाह को, जिस तरह से शिवसेना चुनाव चिन्ह दिया गया। देखो, उद्धव साहब बड़े नेता है, उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अरे सरनाई साहब पढ़ने। All right, there you have it. Eknath Shinde camp now saying that this is the Election Commission's decision, which should be abided with. But unfortunately, the Uddhav Thackeray camp are trying to steal it away from them. This tug of war now only continues and intensifies. In fact, the Uddhav Thackeray camp at this point, what we know is they've reached the Supreme Court, asking for a stay on the Election Commission's order, issuing the bow and arrow symbol to Eknath Shinde, calling them the real Shiv Sena. Uddhav Thackeray and camp right now in a key huddle. They've come together in a very important meeting to try and discuss developments and how to take this case forward. India Today on top of this story. At this point, we're going to slip into a short break. For more on that, you could log on to indiatoday.in. You could also download our app for more. Stay tuned. News and updates coming up next. Can we really untangle the politics of hair? This art campaign by artist Rohit Chawla comes with a social commentary. This rebellious work with an interactive element challenges those who try to corner women and their agency. If you look at our history, when it was, and you read about the Mahabharata, Draupadi faced the same issue where she was pulled by the hair. So it's not about being just liberated in a way where you just want to just do what you have to do, but the society has to give you the choices to make. So his comment is on that, which is called Hair and Her. It makes you act, it makes you think, and most importantly make you ask many questions like, do we all secretly hair shame? Or how much of our self-worth is governed by hair? Or on women being shamed for facial hair, to different races and the systemic oppression of women's bodily expressions. Hair is a metaphor of an expression. When you look at a woman's hair, you actually try to identify her personality through her hair. And that is what, over the years, society has tried to curb. So now it's, that is a metaphor that is used, and looking at what is happening in the world. And it's not only an issue that is to do with India, but it is a global issue.
Art has always been a force of social change, and this project aims to be just that and much more. In New Delhi, with Vaishnavi Kaharwar, Chaiti Narula for India Today. Gift well with Sleep Well. Very good afternoon. You're watching India Today. I'm Nabila Jamal. Shiv Sena versus Uddhav Thackeray Sena. The war really intensifying with the Election Commission allotting Shinde Sena the bow and arrow symbol, calling them the real Shiv Sena. But it appears now the Uddhav Thackeray Sena has rushed to the Supreme Court asking for a stay on that order. We're going to take you through those details. The headlines first. Uddhav moves the Supreme Court over Election Commission Sena symbol order. Uddhav's plea accuses the poll body of failing in its duty as a neutral arbiter. Former Maharashtra Governor's exclusive interview with India Today. Koshari claims that he didn't act with bias during his stint as the Governor of Maharashtra. Shivaji showdown in JNU campus as ABVP and the JNU Students' Union clash over Shivaji portrait. ABVP accuses the left-leaning JNU SU of desecration of the portrait. Enforcement Directorate conducts raids at 14 locations across Chhattisgarh on Chief Minister Baghel's close aides in the coal levy scam. Baghel cries vendetta here, says the BJP is worried after the success of Bharat Jodo Yatra. Shriram Sena Chief Pramod Mutalik's shocking anti-love jihad provocation, says open invitation to youth to trap Muslim girls to counter love jihad, promises jobs and security for those who do it. Ola inking pact with Tamil Nadu government for electric vehicles and battery units sparks political war in Karnataka. The opposition now and top industry faces question why Karnataka lost out on the same despite Ola being a Bengaluru company. All right, now setback after setback, it appears, for Uddhav Thackeray. It's come as a big blow. The Election Commission has now asked for the bow and arrow symbol to be allotted to the Eknath Shinde camp. Let me cut across to a press conference on the same. जे काही नियम आहेत ते मग पुढे आम्ही ठरवून करून टाकू. विलंबन करणार पण तसं लगेच नाही सांगणार, पण तो विचाराधीन राहील. ठाकरे गटाच्या आमदारांचं म्हणणं आहे की हा व्हीप आम्हाला लागू होऊ शकत नाही, आम्ही तो मानणार नाही. ठीक आहे ना, आम्ही कुठे सांगितलं तुम्ही लागू कराच म्हणून, घ्याच म्हणून. ते त्यांच्या मनावरती आहे ना. आमचं कर्तव्य ते आम्ही पार पाडू.
त्यांनी त्यांचं कर्तव्य पार पाडायचं. जे काय असेल ते दूध का दूध पाणी का पाणी होऊन जाईल. सर, हे निकाल आल्यानंतर आता मंत्रिमंडळ विस्ताराचा मार्ग मोकळा झाला असं सांगू शकता आपण? शक्यता आहे तशी वाटते आता. बरेचसे आता आज तुम्ही पक्ष आज विधिमंडळाच्या याच्यावर तुम्ही कार्यालयावर आज ताब्यात घेतलाय, पण दुसरीकडे पाहायला गेलं तर जो पार्टी फंड आहे तो फंड देखील तुम्ही ताब्यात घेणार आहे? पार्टी फंडाचा तो वेगळा भाग आहे. आता हळूहळू पायरी पायरीने आम्ही चढतोय. तू एकदम कळसाला हात लावायला सांगू नकोस की आम्ही पायरी पायरीने चढूनच पुढे घाई गडबडीत काही करणार नाही, चुकीचं काय करणार नाही आणि कोण अडचणीत येणार तेही करणार नाही. ज्या राज्यभरामध्ये शिवसेना शाखा आहेत त्या शाखा संदर्भात काय नेमकी भूमिका आहे ते आता आम्ही ठरवतो. आता मुख्यमंत्री Now Shiv Sena chief priest who is speaking, he has just taken possession of the Vidhan Bhavan office of Shiv Sena. He is saying that as the assembly session in Maharashtra is upcoming, they will be issuing a whip to all 56 MLAs. This is important because there are 14 MLAs who are with Uddhav Thackeray, and if they don't follow the whip, they can be disqualified. He is also saying that be it Shiv Sena Bhavan or the shakhas or the branches of Shiv Sena in various parts of Mumbai, the possession of it will be taken slowly. आम्हाला फायद्याचं ठरत चाललेलं आहे. तेवढे आम्ही संजय राऊतांच्याबद्दल जास्त काय बोलणार नाही. ते जे बोलते ते त्यांना लगला भाऊ. Like many other Shinde section leaders, he is not speaking on commenting on Sanjay Raut. They are saying Sanjay Raut is making mild allegation. There are complaints being registered against him, and we will not comment on him. आणखीन बऱ्याचशा पोलीस ठाण्यामध्ये त्यांच्यावरती गुन्हे दाखल होतील कारण more cases on Sanjay Raut will be registered. He is saying that his comments are hurting the sentiments of the workers, and hence there are likelihood of more FIRs being registered against Sanjay Raut in the coming future. हम लोग ने प्रवेश किया हमारे कार्यालय में, शिवसेना के कार्यालय में, और बाकी हम लोग सब विधायक आए थे. थोड़े बातचीत की. अभी 27 तारीख से हमारा सेशन चालू होने वाला है. 26 में चाय पान का कार्यक्रम होता है, तो उसके पहला थोड़ा हम लोग बैठ के बात करना है, इसलिए हम लोग थोड़े बातें की. नहीं, आप क्या कोई व्हिप वगैरह निकालने वाले, क्या कोई आदेश निकालने वाले हैं? व्हिप वैसे कोई बात आता है तो व्हिप होता है. हर दिन के व्हिप निकालने की कोई जरूरत नहीं होती है. ऐसा कोई क्रम आता है तब हम लोग व्हिप निकालेंगे और वो रजिस्टर निकालेंगे. तो क्या सबको किस तरह कार्रवाई हो सकती है? हाँ, अगर उल्लंघन करते हैं तो उल्लंघन के हिसाब से वो कार्रवाई होते हैं. वो लोग बाद में देखा जाएगा. वैसा ही कोई बात है तो ये हम लोग उल्लंघन वाले को सबक सिखाएंगे. लेकिन सवाल ये भी उठता है कि ये पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है. अब भी चुनाव आयोग ने जरूर आपको दिया, तो उनका ये कहना है कि इस पर आप कोर्ट में स्टे कर रहे हैं, ये जल्दबाजी है और इसमें किसी तरह के कोई अधिकार नहीं होंगे. वो आगे का देखा जाएगा. अभी जो हुआ है सो हुआ है. आज वो लोग भी कोर्ट में गए, कोर्ट ने स्वीकार किया क्या? नहीं ना. उनको बोल दिया आज आपका लेगा नहीं, हम लोग तारीख आपका नंबर भी नहीं आया है, तो अभी शायद कल लेंगे, परसों लेंगे, कभी लेंगे तभी लेंगे. लेकिन जो हमें निर्णय दिया है वो तो स्वागत तो हमको करना पड़ेगा ना. वो हम लोग स्वागत कर रहे हैं. निर्णय में संजय राउत ने 2000 करोड़ का आरोप भी लगाया. वो कम बोला और थोड़ा बोलना चाहिए था. क्या वो ज्योतिष है और ज्योतिष लोगों को ऐसा कोई बोलना नहीं लगता है. वो खुद आपसे मन से निकाल देते हैं, तो और भी आगे आगे आंकड़ा बढ़ाएंगे. पार्टी फंड को लेकर रणनीति होगी सर. हाँ, बयानबाजी करते हुए नजर आए. सीएम को लेकर जिन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया, किस तरह से पार्टी दिखी है? क्या बोला? सीएम को लेकर संजय राउत ने जिस तरह से बयानबाजी की है, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, इससे किस तरह दिखता है? वो हम लोग थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं और उनके तरफ 2-3 FIR दाखिल भी किया है पॉलिटिशियन में, और महाराष्ट्र में और कई जगह हो जाएंगे. फिर उसको याद आएगा कैसा बातें करना और कैसा नहीं करना. पार्टी फंड को लेकर किस तरह से रणनीति होगी आपकी? जो पार्टी फंड होता है पार्टी का, उसको लेके आगे किस तरह से रणनीति होगी? पार्टी फंड के लिए हमारे मुख्यमंत्री साहब, हमारे नेता उपनेते, हम लोग बातचीत करेंगे. अगर क्या सही है वो रास्ते से हम लोग आगे चलेंगे. आगे जो दूसरे दफ्तर है, क्या कारखाने की बैठक दूसरे क्या उसमें शायद देखते हैं हम लोग. कल अगर हमारा कैबिनेट है, कैबिनेट खत्म होने के बाद हम लोग थोड़ा साहब के पास डिस्कस करें. आज वो लोग कोल्हापुर में है, अमित शाह साहब आए हैं, तो
कल ही हम लोग बात करेंगे. मुख्यमंत्र्यांसोबत आमदारांची बैठक कधी होणार आहे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर? आता आम्ही तेच ठरवलेलं आहे. आम्ही उद्या साहेबांशी विचारतो, पण एक 2-3 दिवसामध्ये आम्ही ती बैठक तय करू. गोगोले सगळ्यांना होतो तो सगळ्यांना होणार. व्हीप हा सगळ्यांना लागू होतो, त्याच्यामध्ये कोणी सुटलेलं नाही आहे. मग ते सगळेच आले त्याच्यामध्ये. हिंदी में बताइए कि व्हीप आपका किस किस को लागू होगा? सबको. जो अभी पार्टी के जो हमारे विधायक है शिवसेना पार्टी से चुन के आए हैं और चिन्ह के ऊपर चुन के आए, उनको सब वो व्हिप लागू हुए. लेकिन वो कह रहे कि आप उद्धव जी का भी व्हिप मानेंगे, आपका व्हिप नहीं मानेंगे. वो अभी क्या है, वो किसका व्हिप मानेगा क्या मानेगा वो उनके दिल के ऊपर है. लेकिन कायदे के ऊपर हम लोग जो व्हिप बजाएंगे वो सही होगा. सर आप जो है आप आगे और भी दूसरे जो कार्यालय है महानगर पालिकाओं में बाकी दूसरे वो आज ही नहीं हम लोग बता सकते हैं, बोल सकते हैं. कल हमारी मीटिंग होने के बाद हम लोग क्या बोले, हम लोग एक एक पायरी चढ़ेंगे, डायरेक्ट कलश पे हाथ नहीं लगाएंगे. चल बोलो. हा जो व्हीप आहे हा उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांना लागू होईल. मी मगाही सांगितलं ना, ज्या चिन्हावरती आणि पक्षाच्या नावावरती निवडून आणले त्या सगळ्यांना, पण ते कोणी का असं It will be implemented on all MLAs of Shiv Sena. It will be implemented on Thackeray. It will be implemented on Shinde. All will be liable to follow the whips which will now be issued by Shiv Sena. करतो आम्ही अधिवेशन काळामध्ये त्याचं डिस्कशन होईल आणि आम्ही ते करू. कारण आता शिवसेना भारतीय जनता पार्टी जॉईन आम्ही आहोत, त्याच्यामुळे त्या दोन्ही बसून आम्ही त्या समित्या स्थापन करू. गूगल साहब ये आरोप लगा है कि 2000 करोड़ का सौदा. अरे ठीक है ना, अभी वो मैं बोला ना, वो कम बोला है और उसने बढ़ाना चाहिए. जय जय महाराष्ट्र. थैंक यू. All right, there you have the chief whip of Uddhav Thackeray, Shiv Sena, who says that this is unconstitutional what the Election Commission has done by granting the bow and arrow symbol to the Eknath Shinde camp. Says there are several constitutional points that have been overlooked. They've now reached out to the Supreme Court with a plea, and the plea asks to withhold, or rather impose a stay on the Election Commission's order until a plea decides, until a plea that connects with the discussion on disqualification of some of their MLAs is heard in the Supreme Court. Let me cut across to Mustafa joining us on the phone line, tracking those developments there in Mumbai. Mustafa, a quick word. We heard the chief whip of the Uddhav Thackeray Shiv Sena camp speaking, and he's asserted that they will fight until they get their, until they have their rights on the bow and arrow symbol, which has now been granted to the Shinde Sena. Tell us a little more on what's the purpose of this top-level meet. We know that the plea has been filed in the Supreme Court. On the other hand, okay, we've lost Mustafa's connection there. We're going to try and patch him back. But here you see a key huddle there by the Uddhav Thackeray camp as they come together to discuss the future course of action. How are they going to really take this forward? It's a big blow for them at this point, as the Election Commission has really recognized Eknath Shinde and camp as the real Shiv Sena, notifying that the bow and arrow symbol will now belong to the Eknath Shinde camp. This comes as a massive blow to Uddhav Thackeray, who hoped that the wait for at least 6 months would really conclude in him gaining control of the bow and arrow symbol, which really speaks for a lot. It would mean that he and his camp, barely a handful of MLAs there, would be deemed as the real Shiv Sena, but that hasn't happened. The Election Commission has recognized that the Eknath Shinde camp has the majority of the strength. At least 76% of the electorate, those who won elections in the previous assembly polls, are all now with Eknath Shinde, and therefore, since he has the majority, he gets the bow and arrow symbol. Now, this fight has reached the top court, Supreme Court, to hear the matter, as a plea has been filed by the Uddhav Thackeray camp. All right, shifting our focus now on the big controversy over Congress's Gautam Das attack on Modi. Congress's Pawan Khera's down to name calling
Well, the Congress Neta, Pawan Khera, insults Prime Minister Modi and his father. Pawan Khera later claims it was a mistake. BJP now fuming over that comment. Quite naturally, BJP saying Congress stooping to such new niche levels. जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है दामोदर दास सॉरी। जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है दामोदर दास सॉरी। जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है दामोदर दास सॉरी। All right, I'm going to quickly cut across to Mashmi Singh joining us, tracking the Congress and the comments made by Pawan Khera. Mashmi, a quick word from you. As we see, Pawan Khera has made a statement almost insulting Prime Minister Modi, calls him Gautam Das Modi, now comes on to correct his statement, saying it was a mistake, and he tries to clarify. Is it justified? Mashmi, if you can hear me? Well, I'm going to try and connect Mashmi on that. But here, a big row there over Congress's Gautam Das comment, referring to Narendra Damodar Modi as Gautam Das. This is what Pawan Khera has said while speaking at a presser. In fact, he later went on to clarify, saying that he was genuinely confused about Prime Minister Modi's middle name. Let me cut across to Pawan Khera. Though, what he said yet again. If we could play that out. Pawan Khera calling Narendra Modi Gautam Das Modi, and then says, I genuinely forgot. Sorry. जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है दामोदर सॉरी। जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है दामोदर सॉरी। All right, cutting across to Supriya Bhardwaj for more on that. Supriya, a quick word from you. Pawan Khera says he genuinely forgot Prime Minister Narendra Modi's middle name. He calls him Gautam Das Modi before he was corrected by his colleague beside him. He now says, I forgot. Is that really a justification that one could take? Well, this is what the Congress party is maintaining, Nabila. They are saying, especially Pawan Khera is saying, that in the flow of the speech that he was giving, it was a slip of tongue, and at the same time he said that there was no malafide intention. He actually forgot the middle name of Prime Minister Narendra Modi, and he's saying that it was just a slip of tongue and there was no intention to connect it with the Gautam Adani. But the BJP is up in arms and they are saying that this was being done deliberately. So the Congress party as well as the BJP is up in arms against each other. Pawan Khera is maintaining it is nothing short of just a slip of tongue, but on the other hand the BJP is saying that it was a deliberate move. All right, you know, at this point, of course, Pawan Khera has received a lot of flack. BJP, as expected, firing at him, saying this is the new niche that the Congress has stooped to. Pawan Khera says that it was genuinely a mistake. Tell us a little more on how the Congress has responded to this. Has any other Congress leaders jumped in to make a comment or clarify on this? All right, we've lost Supriya's connection as well. I'm going to cut across though what Pawan Khera said, calling Narendra Modi as Gautam Das Modi, then goes on to clarify, saying that he genuinely forgot Narendra Modi's middle name. Here's a listen. जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है?
गौतम दास है दामोदर दास सॉरी. Congress's Pawan Khera there calling Narendra Modi as Gautam Das Modi. This has upset the BJP naturally so, and has accused the Congress of stooping to niche levels. Pawan Khera goes on to clarify later, saying this was a genuine mistake. I forgot what Narendra Modi's middle name was. Now, in a tweet later, Pawan Khera comes on to clarify, saying that he was genuinely confused. Now, how far is that the truth? Of course, we've got to take his word on it. He said he was genuinely confused. He tries to seek help from his colleague sitting right beside him. His colleague even clarifies, saying it's Damodar Das Modi, but Pawan Khera there almost looking very confused when he named Narendra Modi, his full name, when he called out. He seemed to be quite confused despite being a spokesperson to the grand old party, a man who's regularly speaking on Prime Minister Modi. Ironic that he forgets his middle name. Let me cut across to Himanshu Mishra joining us. Himanshu, Pawan Khera goes on to clarify on his Twitter platform, saying he genuinely forgot Narendra Modi's middle name. Isn't that hard to believe for a national spokesperson of the Congress party who is day in, day out speaking and counting the mistakes by the Modi government, forgets Modi's middle name? एक तरीके से बीजेपी के जो लगातार हमले हैं वो पवन खेड़ा पे हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो पिता का नाम उनके नाम के बीच में है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, यानी कि उनके पिता के नाम को जो है अपमानित करने का काम किया, उनको गलत तरीके से उन्होंने जो है उनके नाम को लिया और फिर किसी से पूछा। तो एक तरीके से पवन खेड़ा अपनी सफाई जरूर दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी को लेकर पूरी तरीके से कांग्रेस पे हमलावर है और बीजेपी का ये मानना है कि कहीं ना कहीं जो है वो एक तरीके से उनके पिता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो पिता हैं उनके नाम को बिगाड़ा गया, उनका के साथ अपशब्दों का प्रयोग किया गया है। ये बीजेपी बर्दाश्त नहीं करेगी और इसीलिए कई जगह से ये कंप्लेन आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो एफआईआर कराने वाले हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि पवन खेड़ा ने जो है अपने उस जो भी बयान था प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उस पर जो है उन्होंने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि वो मिस्टेक गलती से जो है वो नाम उनके मुंह से गलत निकल गया था। ये जब उन्होंने कहा था क्या ये सही में गलती थी या जानबूझ के उन्होंने ऐसे बोला? क्या आपका क्या एनालिसिस है हिमांशु? मुझे लगता है कि पवन खेड़ा बहुत लंबे समय से जो है कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और जिस तरीके से उन्होंने नाम लिया तो गलती होने की संभावनाएं जो है कम हो सकती हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने उनका नाम भी लिया तो साइड में जो सज्जन बैठे हुए थे उनसे उन्होंने पूछने की कोशिश की कि क्या ये सही नाम है, तो उन्होंने करेक्ट भी किया। लेकिन देखने वाली बात यह है कि किस तरीके से अब उन्होंने सफाई तो दे दी है, क्या भारतीय जनता पार्टी उस सफाई को मानती है या नहीं मानती है, या पवन खेड़ा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे राज्यों में कंप्लेन कराएंगे। हिमांशु हमारे साथ जुड़े रहिए। I'm going to cut across to the bite yet again, that clipping of Pawan Khera calling Narendra Modi Gautam Das Modi. Let's listen in. बना सकते थे जब अटल बिहारी वाजपेयी, जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है दामोदर दास सॉरी। जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है दामोदर दास। All right, there you have it. Well, it looks like a slip up, but for a man as fine as Pawan Khera with his political comments, he is day in and day out speaking on every other news channel and speaking and counting Prime Minister Narendra Modi and his government's faults and constantly highlighting Prime Minister Modi in various of his political debates. For him to forget Prime Minister Narendra Modi's full name seems
a little hard to digest, but nonetheless, Pawan Khera has come out on his Twitter platform to say that it was a genuine mistake. He was confused. He sought help from his colleague there. It appears in that video there. As soon as he made a mistake, his colleague right beside him tried to correct him, saying it's Damodar Das. And then he goes on to clarify and then again looks confused, saying, is it Gautam Das? Is it Damodar Das? For a Pawan Khera, a man like him, it certainly is hard for us to take his justification, claiming this was a genuine mistake. Raj Gopalan, senior journalist, joining us on the phone line. Mr. Gopalan, Pawan Khera clarifies, saying that this was a genuine mistake. He says he makes a mistake, he falters there, his colleague corrects him, and then he corrects himself and then again looks confused, saying, I thought it was Gautam Das. Really, Pawan Khera, not knowing Prime Minister Modi's middle name? Pawan Khera is a person who has a loud mouth and he is a motor mouth. Pawan Khera should understand the tallness of Mr. Narendra Modi. He cannot ridicule Narendra Modi. And second thing, my understanding is, the Enforcement Directorate is going to examine Mr. Sisodia on liquor scam case. There are indications that many Congress leaders will also be questioned. I don't think that, Pawan Khera should use this type of languages because he is under the threat of ED. Therefore, he is now withdrawing. My understanding is he is also heckling Narendra Modi. So one should understand what Narendra Modi's stature is. He is MP and he is controlling 303 MPs. He could win all the seats in North India. Congress has been totally routed. If Pawan Khera speaks like that, Congress will get only 10 seats in the 2024 Lok Sabha election. Right. People will not, voters will not leave that. Voters will punish Congress thanks to Pawan Khera. All right. Stay with us, Mr. Gopalan. We have Gajendra Singh Sirsa joining us on the phone line as well. Mr. Sirsa, a quick word from you on Pawan Khera calling Narendra Modi Gautam Das Modi. This is more or less the statement that he's made and then calls it a mistake, a genuine mistake, that he forgot Prime Minister Modi's middle name. Would you take him face value? देखिए, सबसे निचले स्तर की गंदी राजनीति का एक तरीका है किसी के माँ बाप को बीच में लाना। उनके पिताजी को, उनकी माताजी के बारे में भी पहले बोला गया आम आदमी पार्टी के द्वारा। कांग्रेस ने उनको पहले बहुत कुछ बोला प्रधानमंत्री जी को, लेकिन इतने स्तर तक गिर जाएंगे कि आप उनके पिताजी के प्रति ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल करेंगे, ये बहुत ही घटिया किस्म की राजनीति है। कांग्रेस के पतन का यही कारण है। कांग्रेस की ये जो एरोगेंस है कि हम किसी के प्रति कुछ भी बोल सकते हैं, इस एरोगेंस ने ही गांधी परिवार को नीचे लाया और कांग्रेस को नीचे ला रही है। लेकिन देश के लोग समझदार है, देश के लोग इन चीजों की बर्दाश्त नहीं करते। यही कारण है कि पिछली बार भी जब उन्होंने ऐसी बातें कही, मौत के सदाकत जैसे वर्ड इस्तेमाल किए, तो लोगों ने उनको सजा दी। अब भी उनके दिमाग में से अपना अहंकार नहीं जा रहा, अपने खानदान का अहंकार नहीं जा रहा, कांग्रेस से अपनी लेगेसी का अहंकार नहीं जा रहा। और यही कारण है कि पवन खेड़ा जैसे लोग, मुंह फट लोग इस तरह की बदतमीजी करें, इस तरह की गंदी राजनीति करें, इस तरह की गंदे किसी के परिवार के प्रति इस तरह के अपशब्द बोले, कभी भी कोई देशवासी बर्दाश्त नहीं करेगा। जी, इन्होंने अब अपॉलॉजीज, सॉरी तो नहीं कहा है, मगर बोला है कि ये एक जेन्युइन मिस्टेक था। क्या आप उनको माफी देंगे? नहीं, देखिए, जेन्युइन मिस्टेक होती है लाइफ में, ऐसा नहीं होती, लेकिन जिस तरह से वो जानबूझकर शरारती तौर पर बाद में हंस रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि हाँ नहीं, ये तो नाम, वैसे तो असली नाम उनका यही होना चाहिए, इस तरह की ये जेन्युइन मिस्टेक कुछ मिस्टेक नहीं है। ये मैंने बताया कि अहंकार में एरोगेंस की निशानी है और इसी एरोगेंस का लोगों ने जवाब दिया था। हमने क्या माफ करना ना करना, लेकिन देश के लोग उनको माफ करने वाले नहीं हैं। Manjinder, thank you very much for joining us on that. We're clearly here, Pawan Khera now in the eye of the storm as the BJP fuming over a comment that he made where he called Narendra Modi Narendra Gautam Das Modi and says it was an error. He was genuinely confused about Modi's middle name. Cutting across to Pooja Shali, my colleague joining us from the newsroom. Pooja, really hard to digest. Pawan Khera, who's a really polished spokesperson of the Congress party, in every debate is counting the mistakes of Narendra Modi, his government. Him to forget Narendra Modi's middle name is really something that is that one can't really digest.
So, Nabila, two important facts here. One, Pawan Khera is not just a young spokesperson or a neta. He has a political experience of approximately 20 years. He's been a close aide of former Delhi Chief Minister Sheila Dikshit. So, he clearly understands the manner in which the public speaking does take place. Secondly, this press conference was on Gautam Adani Hindenburg report, which the Congress has been escalating, asking for a joint parliamentary committee and other investigations into this case. So, at that point, when he was mentioning Prime Minister Narendra Modi, and he said, Narendra Gautam Das Modi, was it a pun? Was it a genuine mistake that Pawan Khera is saying it is? Now, why I use the word pun is because the middle name in Indian tradition is usually that of a father. And for him to at that point mention Gautam Adani, which he says is by mistake, but with that reference coming in refers usually to a father, that's why it's become a huge political controversy. And at a time when they were addressing the Gautam Adani Hindenburg report. Now, third and importantly, asking for a JPC is a political demand. But like we have seen in the past as well, each time Prime Minister Modi has been personally targeted by the opposition, specifically the Congress party, it hasn't actually worked for the opposition because Prime Minister Modi himself has been able to in some way twist it and use it to his own advantage. Whether it's Maut Ka Saudagar, whether it's Ravan, eventually Prime Minister Modi has ensured that he gets the support from people, that he's been personally targeted while he's trying to work for the country. Nabila. All right, Pooja, thank you very much for joining us on that. This clearly BJP accusing Pawan Khera of deliberately insulting Narendra Modi and his father, as Pawan Khera calls Narendra Modi as Gautam Das Modi and then goes on to clarify, saying it was a genuine mistake. Let me cut across to Gaurav Bhatia of the BJP addressing a press conference on the same. उसमें जिस नेता ने सबसे ज्यादा नफरत फैलाई और हजारों सिख परिवार शोक लिप्त रहे, उस जगदीश टाइटलर को आज एआईसीसी का इलेक्टेड मेंबर बना दिया गया है। और ये कहना अब गलत नहीं होगा कि कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी कोई है तो वो जगदीश टाइटलर जैसे नफरत फैलाने वाले, कानून तोड़ने वाले और नरसंहार करने वाले आरोपी ही हैं। और मुझे याद आता है कि कुछ समय पहले राहुल गांधी एक यात्रा कर रहे थे जिसका मुख्य लक्ष्य भारत को तोड़ने का काम करना था और कह रहे थे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। राहुल गांधी जी, कृपया करके ये बताइए, जिसके ऊपर 84 के दंगों का मुकदमा चल रहा है, जो चलाना आपकी उस वक्त की सरकार को चाहिए था, लेकिन मरहम लगाने का काम किसी ने किया तो श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया और मुकदमा चल रहा है। आप जब एक आरोपी को, जो कि मुजरिम है, एआईसीसी का इलेक्टेड मेंबर बनाते हैं तो क्या संदेश देते हैं? ये मोहब्बत की दुकान है या नफरत की दुकान है? और आपका असली घिनौना चेहरा अब सामने आ गया है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये पहली दफा नहीं है कि जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार और तमाम और कांग्रेस के नेता जिन्होंने नरसंहार किया, उनका महिमा मंडन किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। पिछले साल हमने देखा था किस तरह से दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सोनिया गांधी जी ने, जो कि उस वक्त अध्यक्षा थी, जगदीश टाइटलर को जगह दी। भारत तोड़ो यात्रा में जब यात्रा दिल्ली पहुंची तो जगदीश टाइटलर भी वहां पे व्यवस्था देखने के लिए उपस्थित थे। और अब ये तीसरा मौका है बहुत ही कम अवधि में जो ये दिखाता है कि राहुल गांधी और जगदीश टाइटलर दो जिस्म एक जान है। बिना जगदीश टाइटलर के कांग्रेस की कोई पहचान ही नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। और मैं इतना ही कहूं। All right, we're going to continue tracking those developments there. BJP furious with the Congress's Pawan Khera for
insulting Narendra Modi. Taking you through that on the other side of a short break. Stay with us. Over 3 decades, Business Today has delivered news, views and analysis like no other. Now, Business Today presents the future. Could I request Mr. Arun Puri, our Editor-in-Chief, to come up on the stage with the Finance Minister as we unveil the anniversary issue of Business Today. This is the 31st anniversary of India's #1 news magazine. BT produces a cover with an AI avatar of Petition on its 31st anniversary issue. Visit businesstoday.in/subscribe and subscribe now. Amid strained ties with China over the Chinese spy balloon, US Secretary of State Antony Blinken met his Chinese counterpart Wang Yi. Blinken directly spoke about the unacceptable violation of international law by China. He also raised the Russia-Ukraine war during the meeting. North Korea has fired a long-range ballistic missile which landed into the sea of Japan's western coast. This comes after a warning of strong response to the future military drills by United States and South Korea. As per Japanese authorities, the missile was pushed inside Japan's exclusive economic zone after it was launched. Iran President Ibrahim Raisi has wrapped up his symbolic visit to China. According to media reports, Iran and China have signed an agreement worth $3.5 billion. Raisi's visit marked the first state visit by the Iranian president to Asia's economic hub in 2 decades. The US has claimed that Russia's Wagner mercenary group has suffered more than 30,000 casualties since Moscow's invasion of Ukraine last February. About 9,000 of those fighters killed in action. The US has estimated 90% of the Wagner Group fighters killed in Ukraine since December 2022 were convicts. The death toll due to earthquake in Turkey and Syria has reached 46,000 mark. Search and rescue operations are still continuing with the hope of finding more survivors. Miraculously, 3 people were rescued alive from under the rubble after 13 days. Bonnie Kapoor took to social media to announce that the biography on his late wife and actress Sridevi is in the works and will release later this year. Speaking about the same, he called his late wife a force of nature. Titled as The Life of a Legend, the book will feature the key aspects of Sridevi's life and career. It will be published by Westland Books. The actor had passed away in 2018, leaving a void in the industry. And on her 5th death anniversary, her popular film English Winglish is set to release in China. The drama marked Sridevi's comeback to films after a long hiatus of 15 years. English tuition? I can come in?
You may not. You need to ask, may I come in? English Winglish had gone on to become India's official entry to the Academy Awards in the Best Foreign Language Film category for 2013. The story of the film revolved around a housewife who decided to take up English lessons in the US after being mocked by her husband and daughter. She was born to make laddu. I, Shashi, from the India. No, Sashi, not from the India. From India. Why India, not the India? Why America, the United States of America? In her illustrious filmic career, Sridevi had acted in as many as 300 films. India gets its first ever transgender ward. The GT Hospital in Mumbai has opened a facility exclusively for the community. The ward has 30 beds with separate examination and dressing rooms and has gender-neutral toilets. What happens is, of course, if it's a patient is critical, for example, if he needs an ICU, if he requires a surgery, then in these places there is no gender division. So these patients will have to go there. But for other things like nebulization, CPAP, so all that will happen under one roof. GT Hospital has trained more than 150 staff members to sensitize them on providing medical treatment to transgender patients. We've taken the help of transgender community in developing the ward. What are your needs? In that context, we actually had sensitization of around 150 of our own employees to know how to, be sensitive to their needs, to their issues. The hospital authorities say their initiative is a step in the direction of making India more gender inclusive. With Dev Kotak in Mumbai, Bureau Report, India Today. Big news coming in from Pakistan. Pakistan media right now reporting the Federal Investigation Agency, FIA, has now decided to arrest Imran Khan today. At any point today, Imran Khan could be arrested. In fact, the Pakistan media says it quotes Imran Khan likely to be arrested after he appears in court. The FIA team will arrest Imran Khan and hand him over to Islamabad. Imran Khan was asked to appear before the Lahore High Court today, and if at all he does, then he is likely to be arrested at court itself, as his interim bail has now lapsed. Abhishek Bhalla joining us live for a little more on the happenings in Pakistan, as Tehreek-e-Insaf chief Imran Khan is likely to be arrested. He's in fact been evading arrest for quite a while now. Supporters of Tehreek-e-Insaf, they're gathering in large numbers outside his residence, and anytime they get information that Imran might be arrested, they gather outside his home or his office to protect him from any kind of arrest. What's going to be different today, as per Pakistan reports? Well, Nabila, trouble is mounting for former Prime Minister Imran Khan. He has to appear in the Lahore High Court at 2 p.m. today, Pakistan time, which is about 45-50 minutes from now. If the Lahore High Court gives an extension to his interim bail, then that would be a big relief for him. He has been asked to appear in court today because he had not been appearing in the lower court earlier, and as a result of that, the lower court had in fact rejected his extension of interim bail. Now he's facing terror charges because there was a huge protest last year where he was part of. This was against the decision of the Election Commission of Pakistan in the Tosh Khana case, where Imran Khan was accused of drawing monetary benefits from selling gifts that he had got as Prime Minister during official delegation meetings. So those were the charges against him, and since then there has been a lot of trouble in Pakistan. Imran Khan and his supporters have been coming out on the streets against the Election Commission's decision. All this is part of the drama that has been unfolding for months in Pakistan now. All right, we believe that
Imran Khan has been trying to evade arrest on the same matter as well. He has also cited ill health. There was an assassination bid on him, and looking at that, it appears he was given a lot more time, but yet failed to appear even recently in court. How sure are we that Imran Khan at this point might be appearing at that court? Well, he really doesn't have a choice now because it was on February 15th when the lower court, in fact, had, rejected his interim bail. He was seeking interim bail. He had been on interim bail. So what that means is that if his bail was to get cancelled, he could have been arrested. And because he was avoiding court appearances, the court had no option but to reject his interim bail. And that's when he moved the Lahore High Court. The Lahore High Court had given time for him to appear today at 2 p.m. Pakistan time. So it remains to be seen how things pan out today. In about 45-50 minutes, once Imran Khan appears in the Lahore High Court, things will be clear. All right, Abhishek Bhalla, thank you very much. We're going to continue tracking Imran Khan, likely to face arrest in the Toshkana case. In fact, it's been pending for quite a while. He's asked for extension citing ill health, and it appears if he does appear before court now, information coming in from Pakistan media that he very well will be arrested. All right, cutting across to Mumbai. Security development there at Mumbai Civic Body Office. After Sena Bhavan, BMC office now the next takeover. Shinde camp likely to reach the BMC office shortly from now. It appears the Sena versus Sena war only intensifying, with the fight now on to really who's going to be declared the real Shiv Sena. It appears the Election Commission tried to settle the dust, awarded or allotted the bow and arrow symbol, the original symbol of the Shiv Sena, to the Eknath Shinde camp. And you see the Eknath Shinde camp as well rejoicing over that verdict that came in. But Uddhav Thackeray not sitting down, reaches the apex court to try and get some relief from the order issued by the Election Commission and asking for a stay on the matter, in fact. Now, it appears after the Sena Bhavan, BMC office could just be the next takeover by the Eknath Shinde camp. Mustafa Sheikh joining us live for a little more. Mustafa, you're tracking all those developments coming in from Mumbai as we see much of the controversy brewing on really who's going to be declared the real Shiv Sena. Doesn't seem like Uddhav Thackeray and camp are settled with the Election Commission's order. So you see the Eknath Shinde camp quickly acting on the ECI's verdict, staking claim over key offices, including that of the BMC. That's what we hear. Very likely that the Sena might just, the Eknath Shinde camp Sena might just reach the BMC office for a complete takeover there. Well, yes, we had seen in the past that there was some law and order issue which had happened at the BMC office earlier when Eknath Shinde camp had tried to take over the BMC office and it's at CST in Mumbai. But today also we are seeing huge deployment by the police. Currently there is a stay and all the political offices of the BMC have been sealed because the elected corporation terms has expired. The elections are due since last 1 year. But now it's likely that the police deployment has been increased here also. So after Vidhan Bhavan, it's likely that the BMC office possession can also go to the Eknath Shinde faction. This morning they took the possession of Vidhan Bhavan office because assembly is coming up. They are saying that they had a meeting soon during the assembly. There will be whips issued and all the Shiv Sena MLAs, including that of Uddhav Thackeray camp, will have to follow that whip. Otherwise, disqualification action will be taken against them. Back to you. All right. Tell us a little more on right now the Uddhav Thackeray camp in a key huddle. What more do we know on that, Mustafa? Well, yes, Uddhav Thackeray had called for a meeting of his office bearers, and he has said that on ground level to meet people, to motivate the Shiv Senics is an important task for them.
Now they have to revive the party completely after losing the party name and symbol, and it will be a fresh start for this old party in Mumbai. And he has said that there is attempt to take over using power, but we will not give in to this, and we will keep fighting, be it court or on ground or during elections. We will keep fighting. So there is a motivational talk which has been given by Uddhav Thackeray at Sena Bhavan to his party workers, to his office brothers who are still with him, so that they can carry on their fight with the Shinde faction. Back to you. Right. We see a real pushback there by the Uddhav Thackeray camp, not willing to accept the Election Commission of India's verdict on issuing the original symbol, bow and arrow symbol, to the Eknath Shinde camp. They've also reached the Supreme Court with a plea asking for a stay on the ECI's order. Let's see how that pans out. Mustafa, thank you for now. Moving over, in an interstate political war that's erupted over Ola's supercharged multi-crore electric vehicle plant deal, the electric vehicle firm Ola Electric, in fact, at this point, has signed a memorandum of understanding with the Tamil Nadu government, and that agreement has now irked Karnataka's opposition and top industrialists within the state. They're now questioning the Basraj Bombay government, the BJP government in the Silicon Valley, asking them why was the Ola deal not done in Karnataka. In fact, Ola is a homegrown brand. It grew from Bengaluru. It's local to Bengaluru. Then why didn't the BJP government in the state strike a deal like it did in Tamil Nadu, like Ola did with the Tamil Nadu government? In fact, Ola is now promising almost 3,000 odd jobs, and it is a plant that they've promised to set up in the state of Tamil Nadu, generating a lot of revenue as well as jobs to people. This could have highly benefited the people of Karnataka if it happened in the very state. Karnataka opposition training its guns against the BJP government, calling it a real policy paralysis. Congress's Priyank Kharge has said that the BJP government is busy making the youth Gaurakshaks rather than really creating jobs for them. Not only that, industrialists have also expressed their disappointment over the same. The all-out political fight is over the new EV deal to set up the world's largest electric vehicle plant in India. Under this agreement, Ola is likely to invest 7,614 crores to set up a cell manufacturing unit and four-wheeler manufacturing plant in Tamil Nadu. In fact, the investment is expected to generate 3,111 direct jobs. We are losing thousands of jobs, crores of investments. And who's responsible for this? So what kind of investment environment is the current government giving? It goes to show that they are more interested in their 40% rather than the people's, investments coming into Karnataka and creating jobs for the people of Karnataka. It's a big loss. A lot of companies are going from Karnataka to Tamil Nadu to Telangana because this government has totally failed. 40% commission government. They have to pay money for the government. They have to pay money for the ministers. They have to pay for the officers. So that's what we have been telling. This government is total of corruption. So people are moving around from Karnataka. So most uncertain. This government is going to come to end. This is only 60 days government. And again, Congress government is going to form in Karnataka. Definitely we'll see who have gone from Karnataka. We are bringing them back in Karnataka back. All right, on that note, it's a wrap on this edition of The Bulletin. You could log on to indiatoday.in. You could also download our app for more on that. Stay with us. News and updates coming up next. Three people out from under a mountain of rubble on Saturday, 12 days after a massive earthquake struck Turkey and Syria. This man, seen pinned beneath the wreckage, as well as his wife and child, were found alive in the collapsed building in Hatay, the southernmost province of Turkey. The rescue team said the father and mother survived, but the child later died of dehydration. An older sister and a twin did not make it. More than 46,000 people have been killed in the earthquake. The toll is expected to soar, with some 345,000 apartments in Turkey now known to have been destroyed, and many are still